Chalo, we are live now. Let's begin. Good afternoon, everyone. We are live now. Let's begin. We stopped at indices yesterday. We did all the laws of indices. And after doing the important laws of indices, we moved into questions. In the questions, we did the past paper questions. We are yet to do the bit paper questions, is what is left. So let's very quickly start with the bit paper questions. In the bit paper questions, the first question right there, which is question number 6. What does question number 6 say? Well, question number 6 says that if 2 raised to x minus 1 plus 2 raised to x plus 1 is 80, then what is the value of x? Now, what you can do in this is directly options evaluate kar do. Dal do the values of x, which is 8, 4, 5 or 10, and simplify kar do to find out whether the LHS is equal to RHS or not. Jahan x की value डाल के 80 आता है is going to be the correct answer. Or the second choice is solve it. Solving भी ज्यादा difficult नहीं है. 2 raised to x minus 1 and 2 raised to x plus 1. दो values हैं जो add हो रही हैं. And remember that addition पे कोई भी law of indices available नहीं है. Laws of indices are only and only available and valid on multiplication and division. But ये भी 2 raised to x है, ये भी 2 raised to x है, तो इसको similar बना सकते हैं. How can you make this similar? In the next step, you will say that this is nothing else but 2 raised to x upon 2 raised to 1 plus 2 raised to x into 2 raised to 1 is 80. दोनों में 2 raised to x कॉमन है, बाहर निकाल लो. अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 upon 2 plus 2 is 80, which in the next step becomes 2 raised to x into 2 2s are 4 plus 1 is 5. 5 by 2 is 80. Cross multiply 2 raised to x is 80 into 2 by 5. So that's going to be 5. 1s are 5. 5. 16s is 80. In the next step, 2 raised to x is 16 into 2. 2 raised to x is 16 2s are 32. Then 2 raised to x is 2 raised to 5, because 32 is the fifth power of 2, which implies that two values are equal, bases are equal, powers have to be equal. The values x should be equal to 5. The answer is C, x is equal to 5. Write that down quickly. I have asked to share it. They'll share it in a bit.
Moving on to the next. This is a very simple question. What does the question say? The value of 2 raised to 5 by 4, the whole raised to 4 is. So the value of 2 raised to 5 by 4, the whole raised to 4 is 2 raised to 5 by 4, the whole raised to 4 is 2 raised to. जब आप रेज और फिर रेज करते हो, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 5 by 4 into 4 हो जाएगा. The 4 and the 4 cancels. It becomes 2 raised to 5, which is 32. The answer to this is going to be 32. Moving on to the next question. What does the question say? Similar है पिछले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पे देखो ट्रिक किया है सो दैट आप ऑप्शंस इवैल्यूएट ना कर पाओ. क्यों? देखो, the question given to you is 3 raised to x minus 1 minus 3 raised to x minus 3 is 8. And they're asking you to find the value of not x, but x square minus x plus 4. तो उनको वैल्यू x का नहीं चाहिए, उनको वैल्यू चाहिए x square minus x plus 4 का. उससे क्या होता है? Because of which आप ऑप्शन इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे. ये जो आंसर्स है ना, these are not values of x, these are values of x square minus x plus 4. So what we'll have to do is we'll have to say इसे 3 raised to x upon 3 लिख सकते हैं, इसे 3 raised to x upon 3 cube लिख सकते हैं, which is 8. In the next step, दोनों में 3 3 कॉमन है, बाहर निकाल लो. 3 raised to x upon 1 upon 3 minus 1 upon 3 square, which is 27, is 8. In the next step, 3 raised to 8 into 27 minus 3 upon 27 into 3. Up 27 into 3 is going to be correct. 27 into 3 is going to be 81. So that's 81 is 8. 27 minus 3 is 24. So in the next step, 3 raised to x into 24 upon 81 is 8. Or in the next step, 3 raised to x is equal to 8 into 81 upon 24. 3 raised to x is 8 into 81 divided by 24 is 27. अगर लेफ्ट 3 की पावर है तो राइट भी 3 की पावर होनी चाहिए. This implies that x is equal to 3. X is 3. What do they want? They want the value for x square minus x plus 4. So therefore, x square minus x plus 4 will be 3 square minus 3 plus 4, which is 9 minus 3 plus 4, which is nothing else but 10. So the value of this function is going to be 10. Correct? 8.
See, understand that every question is not going to be a 1 minute question. There are going to be averages. जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन, तो ये बैठ के 1 मिनट लिखोगे क्या क्वेश्चन? Will you sit and write this question for 1 minute? Yes or no? Correct. So every question is going to be, some are going to be big, some are going to be small. You'll have to average it out. On an average, it will take around a minute. Some questions will definitely take more time. Some questions will definitely take lesser time. I hope you're done. Moving on to the next question. वो हो गया MCQs, ये true or false. Now ये question that we did, like I said, it's going to be a game of averages. जल्दी लिखो. हो गया? अब ये question, if 3 raised to x is equal to 1 upon 243, then the value of x is 5. This same question, ये दिख रहा है? Literally same question. Literally same question. उन्होंने actually exam में पूछ लिया था. आपके पेपर में they had literally asked the exact same question. बस क्या चेंज कर दिया? यहां पे they said x फाइंड करके मत दो, x फाइंड करके ये वाला फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके दो. बट इट्स एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन. यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया है इन योर बिट क्वेश्चंस. That is why practice whatever they've given you. These are the kind of questions that they are expecting to be asked. If 3 raised to x is 1 upon 243, वो लोग बोल रहे हैं is the value of x 5. दो ऑप्शन है. अब ये ट्रू और फॉल्स है, तो मैं डाल के भी देख सकता हूं ना, अगर 5 डाल के ये आता है या नहीं आता, या फिर सॉल्व कर दूंगा. अब देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मुझे तो ट्रू और फॉल्स में नहीं आएगा क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू में आएगा, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आई एम कॉन्फिडेंट. तो आई एम गोइंग टू से दैट 3 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 243 is basically 3 की fifth power. When I take 3 की fifth power to the numerator, 3 raised to x is 3 raised to minus 5. When two values are equal, bases are equal, implies that powers have to be equal. Is it true or false then? The statement is false. Write that down.
आई थिंक दैट शुड बी इनफ टाइम। एंड इसीलिए ना मैं दोनों पैरेलली कर रहा हूं, बिट क्वेश्चंस एंड ये, ताकि आपको दिखे what is it that they had written in the bit and what are they asking in the actual exam. -2 raised to 5 is 32. Now ये ना जनरल रूल है। जनरल रूल मतलब ये 2 raised to 5 क्या आता है, उसे गोली मारो, नेगेटिव है ना। नेगेटिव नंबर को जब आप एक इवन वैल्यू से रेज करते हो ना, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव नंबर को जब आप एक ऑड वैल्यू से रेज करते हो ना, तो वो नेगेटिव ही रहता है। तो अगर मैं 2 raised to 5 को रेज करता हूं ना, -2 को रेज करता हूं ना 5 से, वैल्यू क्या आता है वो बाद में जाने दो, नेगेटिव है ना। 5 से रेज करोगे ना तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। पॉजिटिव लिखते हो ना तो मैं चेक ही नहीं करूंगा। क्यों? अरे सिंपल है, जब 5 बार -2 मल्टीप्लाई करते हो ना, -2 -2 -2 -2 एंड -2, तो ये दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देते हैं, ये दो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक ही नेगेटिव बचता है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव आता है। एंड 2 raised to 5 is 32, so the answer is a -32 and not a +32। चाहिए तो कहीं बेसिक्स में ये भी लिख देना, नेगेटिव नंबर को इवन वैल्यू से रेज करते हो तो पॉजिटिव बन जाता है, एंड ऑड वैल्यू से रेज करते हो तो वो नेगेटिव बन जाता है। हाँ हाँ, जब आप एक इवन नंबर से रेज करते हो किसी नेगेटिव नंबर को, इवन मतलब 2 4 6 8, तो आप नेगेटिव नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना। नेगेटिव नंबर को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तभी वो पॉजिटिव ही हो जाता है, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब आप ऑड बार मल्टीप्लाई करते हो ना, मतलब 3 बार, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है। 5 बार नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एक नेगेटिव बचता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। व्हेन यू रेज अ नेगेटिव नंबर टू एन इवन पावर, the answer is positive. When you raise it to an odd power, the answer is negative. तो -2 को अगर 5 से रेज करते हो, ऑड नंबर है ये, तो -2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हो, 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव बन जाता है, और 2 बार मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव हो जाता है, और एक नेगेटिव, सो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स इट नेगेटिव। सो द आंसर इज नॉट 32, द आंसर इज अ -32। जब स्क्वायर करते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ 32 raised to 1/5 इज 1/2। 32 को जब 1/5 से रेज करते हैं, 1/5 मतलब 1/5 मतलब 32 का 5th रूट, so it is going to be 32 का 5th रूट।
32 का फिफ्थ रूट, 32 2 की फिफ्थ पावर है, तो आंसर 2 है। वो क्या बोल रहा है, आंसर है 1/2। द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स, गलत है। चलो, moving on to the next. The next chapter that we are going to do is logarithms. Let's very quickly run through the basics of logarithms. I'm coming to logna now. रूट ऑफ 5 रूट ऑफ 32 कैलकुलेटर में फाइंड करना है। अगर फिफ्थ रूट ऑफ 32 कैलकुलेटर में फाइंड करना है तो 32 in your calculators, रूट साइन 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि फिफ्थ रूट लेना है, +1 इंटू इक्वल टू 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. The answer is going to be 2.000058, which is very, very, very close to 2. So the answer is going to be 2. I hope that is clear. Chalo, very quickly then moving on to basics of logarithms. To begin with, log of a into b to some base x is log of a to the base x plus log of b to the base x. Logarithms changes multiplication to addition. Log of a by b to the base x is log of a to the base x minus log of b to the base x. Log of a raised to b to the base x is b log a to the base x.
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ये छोड़ के द कोर मीनिंग ऑफ लॉगरिथम्स और द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम्स, एंड दैट इज log of a to the base b is c। का मतलब ये होता है कि when b is raised to c, I get a value that is equal to a, which means b raised to c is a. This relationship right here is called this relationship right here, logarithmic relationship between a, b, and c, and this is the exponential relationship between a, b, and c. After this, we have the change of base theorem. What is the change of base theorem say? The change of base theorem said that अगर log of a to the base b आपको पसंद नहीं है, then change it to log of a divided by log of b, जहां दोनों का base क्या बना देना? X बना देना. You can write anything in the base, but make sure you write the same value. Now, apart from this, कुछ standards है logarithms में. What are the standard rules? Standard rule number 1, log of the number a to the same base is always 1. Log of 1, no matter what the base is always and always 0. Log of 0, no matter what the base is not defined in mathematics. And logs of negative numbers, no matter what the base is not defined in mathematics. These are a few standards that we have in logarithms. Very quickly, this needs to be in place. If this is in place, logarithms, most of logarithms is covered. इसी के इर्द गिर्द घूमता है logarithm. One in the chat box if anybody is still writing. One if anybody is still writing. एक और पेज छोड़ दो जतिन.
One in the chat box if anybody is still writing. जल्दी. चलो, one last thing. You can take logs of any number to the base 10 in your calculator. ये काम आ सकता है, किसी भी नंबर का log पूछ ले तो बता देंगे. Log of any number to base 10. Step 1, type the number. Step 2, root sign 15 times. Step 3, subtract -1 लिख देते, ऐसे लिख देते, तो लिख देता हूँ -1. Step 4, divided by 0.000070271. Again, I repeat, सिर्फ और सिर्फ logs to the base 10. 10 छोड़ के और कोई बेस का log निकाल नहीं सकते. Only and only logs to the base 10. That's it. Antilog will be the exact opposite of this, Dhiren, but आपको antilog निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. There is no chance or no kind of question जिसमें antilog हो. मैंने क्लास में दिखा दिया था, पर antilog निकालने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है. आपको निकालने की जरूरत पड़ी तो log ही. इसका एग्जैक्ट रिवर्स कर दोगे तो एंटीलॉग आ जाता है. एंटीलॉग के लिए यहां जो किया उसका एग्जैक्ट रिवर्स, विच इज स्टेप 1, टाइप द नंबर. यहां पे लास्ट क्या किया था, डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई कर देना. मल्टीप्लाई बाय 0.000070271, -1 किया था, एड 1 कर देना, एंड लास्टली 15 बार रूट लिया था तो इसे 15 बार रेज कर देना. तो इनटू इक्वल टू वाला कॉम्बिनेशन 15 बार टाइप कर देना. That's it. You will get the log of any number that you want and anti-log of any number that you want. दिखा देता हूं एक आध नंबर एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूं. चलो जल्दी इतना लिख लो फटाफट, एक एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूं.
एंटीलॉग लेने वाला लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो रहने दो, डजंट रियली मैटर। चलो, वेरी क्विकली देन लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। Let's come to the questions that have been asked in ratio and in logarithms. In the old and the new paper, I think दोनों मिला के 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। Starting with question number 55. बेसिक्स के लिए एक और पेज छोड़ दो जतिन, आई थिंक दैट शुड बी इनफ, जरूरत तो नहीं पड़ेगी पर एक और पेज छोड़ दो। Question number 55 says that what is the value of log of 1 to the base 10? Log of 1 to the base 10 is 0. That's it. और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। That is it. Moving on to the next, which is question number 56. 50s में मतलब ये ओल्ड सिलेबस का होगा। Log of 16 to the base 0.5. अब ये क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग मेथड से किया जा सकता है। You can also use the calculator or you can do this actually. Now the question is log of 16 to the base 0.5. Let's go back to basics. हम log कब कब दे सकते हैं? देखो, हम log दे सकते हैं 3 कंडीशन में। जो नंबर है जिसका log आपको चाहिए वो बेस की परफेक्ट पावर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बेस नंबर की परफेक्ट पावर होना चाहिए, या फिर नंबर 3, दोनों मिला के किसी थर्ड नंबर की पावर होनी चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली 16.5 की पावर में नहीं आता। क्यों? अरे बिकॉज बेसिक कॉमन सेंस या बेसिक मैथमेटिक्स, जब कभी आप एक डेसिमल नंबर को रेज करते हो विच इज स्मॉलर देन 1, वो 1 से छोटा ही रहेगा। 1 से बड़े नंबर को रेज करो तो 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटे नंबर को रेज करो तो वो 1 से छोटा ही रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिक फंडामेंटल रीजन 16.5 की पावर में नहीं आएगा। तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। तो कैसे? वेल, द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर अ रीजन दैट 0.5 16 नहीं बन सकता। बट मुझे बताओ 16 किसकी पावर है? कैन यू टेल मी 16 किसकी पावर है? परफेक्ट। 16 2 की पावर में बैठता है, 0.5 को 2 बना सकते हो। द ब्यूटी अबाउट द नंबर 0.5 इज यू कैन मेक इट 2। हाउ? 2 and 0.5 are numbers that are reciprocals of each other. कैसे? 2 अगर मैं रेसिप्रोकल लिखूं तो ये 0.5 होता है, एंड अगर मैं 5 का रेसिप्रोकल लिखूं तो ये 0.2 होता है। तो आप 2 को 0.5 बना सकते हो एंड 5 को 0.2 बना सकते हो। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल लॉजिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are going to use this to find the value of this. अब कैसे? One step at a time. Log of 16 को 2 raised to 4 and 0.5 को क्या? 0.5 को half लिख रहा हूं। Is it okay then if I write it as 2 raised to 4 and half 1/2 होता है?
अगर मैं इस 1/2 के 2 को ऊपर लाके लिखूं तो ये 2⁻⁻1 हो जाता है, करेक्ट। तो हाफ को 2 इनवर्स लिख सकते हो या 2⁻1 लिख सकते हो। वेल देन इन द नेक्स्ट स्टेप कैन आई से दैट दिस इज 2 की पावर न्यूमरेटर में बाहर, 2 की पावर डिनोमिनेटर में बाहर, बचा क्या? log 2 to the base 2. What is log 2 to the base 2? 1. तो बचा 4/-1, which is -4. And that's your answer. The answer is going to be -4. And this is that kind of a question that will have different ways of going about this. अब एक ये method है. There is another method where you can use the calculator. How? Calculator में निकाल लो, -4 आएगा. कैसे? पहली बात तो याद रखना कि मैंने आपसे log of 16 मांगा है to the base 0.5 बराबर। कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ logs to the base 10 निकलते हैं। I cannot find any other logs in the calculator. No other logs in the calculator can be found. तो क्या करें? चेंज ऑफ बेस थ्योरम। चेंज ऑफ बेस थ्योरम बोला, इसे log of 16 डिवाइडेड बाय log of 0.5 लिख दो। अब क्या? अब इसे कैलकुलेटर में कर दो। कैसे? डिनोमिनेटर फाइंड कर लो कैलकुलेटर में, उस डिनोमिनेटर को मेमोरी में डाल दो और फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना, एंड दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इन योर कैलकुलेटर विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। कैसे? 0.5 रूट साइन 15 टाइम्स, एक बार देख लो क्योंकि मैं एक ही बार दिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइडेड बाय 0.00007027 ये हो गया log ऑफ 0.5। इसे मेमोरी में ऐड कर दो m प्लस। लेट्स कम टू द न्यूमरेटर। 16 रूट साइन 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 डिवाइडेड बाय 0.00007027 ये हो गया log ऑफ 16 विच इज द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? log ऑफ 0.5, तो इसे डिवाइड कर दो। कैसे? डिवाइड दिस बाय रिकॉलिंग द मेमोरी एंड इक्वल टू, and the answer is -4.000, which means the answer is negative. And that is how this question can be solved. And if you ask me, after a long time, I saw a nice and an intelligent question asked in an exam. It's a very well curated question. I'm giving you 2 minutes. Write down whatever it is that you want to, and then I'll continue. In your calculators, I'm repeating the calculator calculation once. पहले denominator 0.5, root sign 15 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -1 divided by 0.00007027 ये आ गया log of 0.5, which is your denominator. We will have to push this into the
memory. So m plus. Let's go to the numerator. 16 root sign 15 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minus 1 divided by 0.000070271. Yeah, again, numerator. This has to be divided by the denominator, which is in the memory. Divide MR equal to, तो आपने मेमोरी को रिकॉल करके डिवाइड कर दिया एंड द आंसर इज अ नेगेटिव. That's it. I think that should be enough time to write. Let's come to the new paper. In the new paper, they've asked one and only one question. And although this is also a very good question, can be done in different ways. There is this question can also be solved by basic common sense. मतलब solve करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए. Anyway, the question says that log of 3 to the base x plus log of 9 to the base x plus log of 729 to the base x is 9. Find the value of x. Method number 1. Actually solve करके find करेंगे. कैसे? Logarithms बोला that if logs are adding and subtracting, ये एक दूसरे के साथ interact कर सकते हैं. Provided 3 चीजें होनी चाहिए. Addition subtraction होना चाहिए, है. Basis same होना चाहिए, है. कोई coefficient नहीं होना चाहिए, नहीं है. तो लेके आ जाओ एक साथ. So this is going to be log of 3 into 9 into 729 to the base x is 9. 3 into 9 into 729 is 1963683. So I'm going to say that this is log of 19683 to the base x is 9. अब क्या? अब x की वैल्यू चाहिए ना? Then use the definition of logarithms, which is log of a to the base b is c. So b raised to c will give you a, which means x raised to 9 will give you 19683. But एक minute, x raised to 9 is 19683. x को 9 से रेज करके ये आना चाहिए, और फिर x क्या होगा? अब ट्राई कर लो नंबर्स. कौन से नंबर्स? ऑप्शन में है ही ना. दूसरा कॉमन सेंस, 3, 9 एंड 729 को मल्टीप्लाई किया आपने, एंड दीज पावर्स ऑफ 3, तो ये भी 3 की पावर होनी चाहिए. तो डू 3 इंटू स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, रेज टू 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है. So this is basically 9 raised to 9. So if x raised to 9 is 9 raised to 9, implies that x is equal to 9. So the answer is going to be B, and that is, sorry, have I made a mistake? Oh, sorry, 3 tha na ye. 3 raised to 9. Sorry. So that will be x is equal to 3. मैंने power की value लिख दी. So x is going to be equal to 3. And दूसरा common sense. अब common sense क्यों? देखो, आप 3 नंबर के लॉग ऐड कर रहे हो और आंसर प्योर नंबर आ रहा है. प्योर नंबर मतलब लॉग नहीं है, लॉग निकल जाता है. अब देखो, लॉग तभी निकलता है ना जब हम एक नंबर को उसके बेस की परफेक्ट पावर में लिख सकते हैं. तो अब ऑप्शंस देखो. 5 3 की पावर है क्या? नहीं ना, तो इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी. 6 एंड 3 एक दूसरे की पावर्स है क्या? नहीं, तो नहीं मिलेगी. 2 एंड 3 एक दूसरे की पावर्स नहीं है. जब आप x की जगह 3 डालते हो, then the first part becomes log of 3 to the base 3, second becomes log of 9 to the base 3, and third becomes log of 729 to the base 3. 3 की पहली पावर है, 9 3 की दूसरी पावर है, and 729 3 की छठवीं पावर है. So that is going to be 9. And that is why the answer is 3, because 3 makes the LHS equal to RHS. This was the only question that was asked. A very good question. Write that down quickly.
1 in the chat box if anybody is still writing. 1 if anyone is still writing. Done then? Old and new syllabus में जल्दी लिखो इतने. log of 3 to the base 3 1 है ना. 3 3 की फर्स्ट पावर है, 9 3 की सेकंड पावर है, एंड 729 3 की सिक्स्थ पावर है. तो 1 + 2 + 6 is 9. चलो, तो ओल्ड सिलेबस में 2 क्वेश्चन, न्यू सिलेबस में एक ही क्वेश्चन पूछा था लॉगरिथम्स का. ठीक से देख लो बाद में सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है. दिस इज व्हाट यू विल डू. यू विल लेट दिस जज. आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर बड़ा है, छोटा है, इंपॉर्टेंट है, नहीं है. ऑल ऑफ दैट इज योर. आफ्टर दिस लेट्स वेरी क्विकली मूव ऑन टू द बिट पेपर क्वेश्चंस. लेट्स सी बिट में क्या क्या दिया है लॉगरिथम्स का. What kind of questions are they expecting from you in the bit? Question number 13. What does question number 13 say? The value of logarithm of 8 to the base 2 is. They're asking you the log of 8 to the base 2. Now, very simple. 8 is which power of 2? Third power of 2. So, the answer is going to be 3. पर आप बोलोगे कि सर नहीं क्लिक हुआ, कैसे करेंगे एग्जाम में? कैलकुलेटर यूज कर लो. राइट दिस एज log of 8 डिवाइडेड बाय log of 2. अब बेस क्या बना दिया है? 10. अब क्या? अब कम टू योर कैलकुलेटर्स, डिनोमिनेटर से चालू करना. 2 रूट साइन 15 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.00007027 add that to memory. m plus न्यूमरेटर में आ जाओ. 8 रूट साइन 15 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 divided minus 1 divided by 0.00007027 divide this by the memory. So divide by recalling memory equal to, and the answer is 3.0000, which means the approximately the answer is 3. So nothing much to write here. Whatever you want to do, please make it quick. The next question is question number 26. What does question number 26 say? It says that 1/3 log of
125 to the base 10 minus 2 log of 4 to the base 10 plus log of 32 to the base 10. What do you want me to do? I want you to find the value of this expression. अब ऑप्शंस देके पता चलता है कि इसमें से लॉग निकल रहा है, बट प्रॉब्लम इज 125 का लॉग टू द बेस 10 मुझे नहीं आता, 4 का लॉग टू द बेस 10 मुझे नहीं आता, 32 का लॉग टू द बेस 10 मुझे नहीं आता. ये नंबर्स बेस की पावर्स नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे समेटना पड़ेगा. समेटने के 3 कंडीशंस हैं. कंडीशन नंबर 1, सब में एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, है. कंडीशन नंबर 2, बेस सेम होना चाहिए, है. कंडीशन नंबर 3, कोएफिशिएंट्स नहीं होने चाहिए. कोएफिशिएंट्स हैं तो कोएफिशिएंट्स हटाने पड़ेंगे. कोएफिशिएंट्स कैसे हटाएंगे? दिस इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ 125 रेज टू 1/3 टू द बेस 10 minus log of 4 square to the base 10 plus the log of 32 to the base 10. Log of 125 raised to 1/3. 125 raised to 1/3 is the cube root of 125, and the cube root of 125 is 5 to the base 10 minus 4 square, which is 16 to the base 10 plus the log of 32 to the base 10. In the next step, if they are now adding and subtracting, I can bring them together. So this is going to be log of to the base 10 of positive log numerator में, negative log denominator में, positive log numerator में. So this is 5 into 32 is 160. 160 divided by 16 is 10. Log 10 to the base 10 is 1. So the answer is going to be 1. अब same question, if you have your calculator game on point, आप calculator में भी कर सकते हो. So pay attention. Slow कर रहा हूं, ध्यान दो. 1/3 log of 125 है, तो 125 का log लेना है to the base 10 और उसको डिवाइड बाई 3 करना है. 125 रूट साइन 15 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.00007027 अब इसको डिवाइडेड बाय 3 करना है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 विच इज डिवाइडेड बाय 3. इसे 3 से डिवाइड करना है, हो गया. एड दैट टू मेमोरी m प्लस. नेक्स्ट 4 रूट साइन 15 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.00007027 इसको डबल करना है इंटू 2. ये नेगेटिव है, सबट्रैक्ट दैट फ्रॉम मेमोरी m माइनस. एंड लास्टली 32 रूट साइन 15 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.00007027 इसे कुछ डबल ट्रिपल नहीं करना है, बस पॉजिटिव है m प्लस. मेमोरी रिकॉल करने पे 1 आना चाहिए. मेमोरी रिकॉल इट इज 0.98 समथिंग समथिंग. मेरे कैलकुलेटर में, क्योंकि मेरा कैलकुलेटर ज्यादा ही एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता है, आपके कैलकुलेटर में यू विल मस्ट हैव गॉटन अ वैल्यू क्लोज टू 1. यू विल गेट अ वैल्यू क्लोज टू 1. करेक्ट? फाइन देन, वेरी क्विकली लिख लो. We'll continue to the next question. पॉजिटिव और नेगेटिव से डिवाइड क्या करना है? स्क्रीन पे ही किया था मैंने कैलकुलेटर शेयर किया है. मेरा कैलकुलेटर भी दिख रहा है स्क्रीन पे.
People can see the calculator, right? People can see my calculator calculation, right? Yes, तो आपको ही नहीं दिख रहा है, आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा. मैं भी यहाँ पे साइड स्क्रीन शेयर करके बैठा हूँ, मुझे भी दिख रहा है. Write this down quickly. Whoever AR is, log A into log B is not the rule. It is log A plus log B is log A into log B. Log of A into B is log A plus log B, not log A into log B. गलत है. एक और बार करके तुम लोग बहुत ध्यान दो, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो. मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर इस पेज से करोगे तो. इन योर कैलकुलेटर स्क्रीन क्लियर कर दो. 125 root sign 15 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.000070271. ये हो गया log of 125. इसको 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड 3 इक्वल टू, ये हो गया आपका पहला पार्ट, which is 1/3 log of 125. Add that to memory, m plus 4 root sign 15 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.000070271. ये आ गया log of 4. इसको डबल करना है इंटू 2. ये नेगेटिव है, m माइनस. Lastly, only the log of 32. 32 root sign 15 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 minus 1 divided by 0.000070271. This is positive. Add that to memory, m plus. Done. Recall memory 1.0000, which is very, very, very close to 1. So the answer to this is going to be 1. फटाफट लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं. One in the chat box if anybody is still writing. One if anyone is still writing. आ जाओ then to question number 31.
The value of log of 1 to the base 10 is, log of 1 to the base 10 is 0. Log of 1, no matter what the base is always and always 0. And I again want to point out, ये same question उन्होंने ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 55 पूछा था. Write that down quickly. There isn't much to write though. Write that down quickly. If a is equal to b square is equal to c cube, then the value of log of abc to the base a is. If a is equal to b square is equal to c cube, then the value of abc to the base a is. आपको पूछ रहे हैं log of abc to the base a. अब मैं फिलहाल क्यों नहीं निकाल के दे पा रहा log of abc to the base a? क्योंकि abc a की पावर नहीं है. तो क्या कर सकते हैं, इसको सेम बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे, है ना अपने पास वैल्यू. You have a relationship. How are you going to use the relationship? Simple. I'm going to start off by saying that let what? A be b square, bc cube be equal to k. तो a के जगह पे क्या है, b स्क्वायर के जगह पे k, c क्यूब के जगह पे k. a की जगह पे k, b की जगह पे k raised to 1 by 2 and c की जगह पे k raised to 1 by 3. अब कर दो सब्स्टिट्यूशन. log of abc to the base a मतलब log of a which is k, b which is k raised to half, c which is k raised to 1 by 3 to the base a which is k. In the next step, this is going to be log of k into k raised to half into k raised to 1 by 3. If three values are multiplying and bases are the same, the powers will add and become k raised to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 to the base k. So this is log of k raised to 2 and 3. 6 है LCM फिर. 6 3s are 2 3s are 6. तो ये 3 हो जाएगा. सॉरी, ये 6 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा टू द बेस के. 6 plus 3 plus 2 is 9 plus 2 which is 11. This is log of k raised to 11 by 6 to the base k. Can I say that log of a raised to b becomes b log a and log of k to the base k is 1. So the answer is 11 by 6. The answer to this is going to be 11 by 6. Very quickly write that down, please. That is LCM. We are adding 1, 1, half and 1 by 3. We need a number जिसमें 1 भी है, 2 भी है and 3 भी है.
6 ऐसा नंबर है जिसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 1 6 जा 6, तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज 11/6। One in the chat box if anybody is still writing. One if anyone is still writing. Moving on to the next question, which is question number 53. Question number 53 says that log of 7 to the base 7, 1. Log of a number to the same base is always and always 1. कुछ लिखने की जरूरत है नहीं इसमें खास. With that, MCQs are done. We move on to the true or false. The first question in the true or false is question number 3. The log of m into n to the base is. See, log of a into b to the base x is logarithm changes multiplication to addition. तो इस multiplication को भी addition में change करना पड़ेगा. So log of mn to the base is log of m to the base a plus log of n to the base a, which is true. So their answer is going to be false. गलत है. I think that was enough time to write that. वैसे भी small question था बहुत. The next question, which is question number 33, is log to the base 3 of log to the base 3 of x is 0.
देन x इज 1। वेल मैं निकाल के देख लेता हूं x की क्या वैल्यू आती है। कैसे? अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बाहर से एक एक लॉग निकालते हुए आना पड़ेगा। तो पहले लेट मी कंसिडर दिस एज x। सो दिस इज log ऑफ a टू द बेस b इज c। तो b raised to c gives me the value a, or 3 raised to 1 is log of x to the base 3, or log of x to the base 3 is 3. अब क्या? सेम, log of a to the base b is c, p raised to c is a, which means 3 raised to 3 is x, or x is equal to 27. X is not equal to 1, so the answer is going to be false. Oh sorry, 0 है ये, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 6 बन जाएगा 3 raised to 0 which is 1। अब ये बन जाएगा 3 raised to 1 is x, so x is equal to 3 हो जाएगा। फिर भी फॉल्स ही आंसर, उनके हिसाब से x 1 है। हाँ, आरएचएस में पिछले वाले क्वेश्चन में आरएचएस में इनटू के बदले ऐड होता तो बराबर होता फिर। ये लिख लो। Value of log of 1 upon 10 to the base 10 is -1. Log of 1 upon 10 to the base 10 is log of 1 upon 10 को 10 raised to -1 to the base 10 लिख सकते हो, which is -1 log of 10 to the base 10, which is -1. Chalo, this is it. These are all the past paper and bit questions that they have asked in logarithms. We very quickly move on to the next chapter, and that is going to be progressions. APGP कर लेते हैं। Let's come to the basics of progressions to begin with. AP से चालू करते हैं। The basics of AP, arithmetic progression की अगर बात करो तो the nth term of an arithmetic progression is a plus n minus 1 into d. Sum up till the nth term is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. दूसरा फॉर्मूला है Sn is n by 2 a plus l, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो। वेरी ऑनेस्टली एपी में दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज। जीपी का क्या? जीपी में सेम, nth टर्म इज ar raised to n minus 1. Sum up till the nth term. Sum up till the nth term of a GP has different formulas. Formula number 1. Formula number is A1 is A r raised to n minus 1 upon r minus 1 if the absolute value of r is greater than 1. The sum up till the nth term of a progression or a geometric progression is A1 minus r raised to n upon 1 minus r if the value of r is less than 1, and it is NA if r equals 1. Another thing that we learned in a GP is sum up till infinity of a GP. S infinity is given by A upon 1 minus r, and it only exists if mod of r is less than 1. These are the basic. इसके बाद we learned assumptions for AP and GP.
AP 3 number of terms. तो अगर 3 टर्म इन एपी बोल दूं तो मिडिल ए, आगे वाला ए प्लस डी, पीछे वाला ए माइनस डी। 4 टर्म बोल दूं तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो ए प्लस डी को ए को हटा दो, तो यू हैव ए माइनस डी, ए प्लस डी, एंड बिकॉज इट्स अ 2D डिफरेंस, इट इज गोइंग टू बी ए प्लस 2D एंड ए माइनस, सॉरी, ए प्लस 3D, एक डी में 2 और डी ऐड करते हो तो 3D एंड ए माइनस 3D। वही 5 टर्म बोल दिया तो फिर भी इजी है, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए प्लस 2D। सिमिलरली यही क्वेश्चन अगर जीपी में पूछा जाए तो हाउ मेनी टर्म्स डू यू वांट, उस पे पता चलेगा। तो अगर मैं 3 टर्म मांगू इन जीपी, देन द आंसर इज ए आर, ए बाय आर। अगर मैं 4 मांगू तो ए आर, ए बाय आर, ए आर क्यूब, a by r cube. This pretty much covers maximum amount of questions of GP. Write that down, please.
One in the chat box if anybody is still writing. One if you are still writing. जल्दी लिखो. Chalo, let's begin with first questions from the past papers. What kind of questions are they expecting? Starting with question number 54. And I want to point out something here. Question number 54 says that if 28x and 7 are in GP, then what is the value of x? If 28x and 7 are in a geometric progression. हाँ, एक पेज लीव कर दो, just in case कुछ होगा तो. If 28x and 7 are in a geometric progression,
अगर ये तीन टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, देन मिडिल टर्म उसका क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा. तो x विल बी, या रादर लेट्स राइट इट दिस वे, अगर ए बी सी आर इन अ जीपी, then p is the positive or the negative square root of AC. So x is the positive or the negative square root of 28 into 7. X is 28 into 7 का square root. So the answer is plus or minus 14. The answer is going to be A. Moving on to question number 62. ये 54 था, सॉरी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 58. और ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं that if 2a plus 2a minus 1, a minus 2 and a plus 5 are in an arithmetic progression. AP जब होता है ABC, इसका मतलब है कि ये जो बीच का टर्म है B, ये ANC का अरिथमेटिक मीन होता है. मतलब ये जो बीच का टर्म है a minus 2, ये 2a minus 1 एंड a plus 5 का अरिथमेटिक मीन है. a minus 2 को ये 2 आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा नीचे से, ऊपर बचा 2a minus 1 plus a plus 5, so that's 2a minus 4 is 3a plus 4. 2a उधर, 4 इधर, -4, -4, -8. 3a minus a is a is equal to -8. So the value of a is a -8. ये चाहिए तो बेसिक्स में लिख सकते हो. If A, B, C are in AP, then A is the arithmetic mean between B and C. वो चाहिए तो लिख ही दो, आ जाओ. बेसिक्स के आके लिख लो. बट ना, लेट्स डू वन थिंग, टेबल बना के लिख दो. अगर एपी है तो बी इज द अरिथमेटिक मीन, ए प्लस सी बाई 2. अगर जीपी है तो बी इज द ज्योमेट्रिक मीन. और अगर एच पी है तो बी इज द हार्मोनिक मीन. ये तीन चीजें लिख लो बेसिक्स में.
आ जाओ टू दिस सोल्यूशन. Write down the solution quickly. One in the chat box if anybody is still writing. One if anyone is still writing. Dhiren, I'm going to repeat it but very quickly. जब तक लोग लिख रहे हैं. अगर ए बी सी एपी में है तो ये बीच वाला टर्म पहले और लास्ट टर्म का एवरेज होता है, विच मीन्स ए माइनस टू ए माइनस वन एंड ए प्लस फाइव का एवरेज होता है. तो बस इसके बाद एल्जेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन है. टू गोज टू द अदर साइड एंड मल्टीप्लाइज. ये दोनों ब्रैकेट खुल के ऐड हो जाते हैं, टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है. टेक द माइनस फोर देयर, थ्री है हियर, ए बिकम्स माइनस एट. जब जो दिखा रहा हूं तब वो लिख लेना. Understand that you are 130 students. I can't keep doing this. Is that understood, Shaban? Moving on to the next, which is the last question they had asked in APGP. The product of three terms in GP is 5 and 2. The middle term is. तीन टर्म है जो जीपी में है. तीन टर्म का हमारा assumption क्या होता है? बीच वाला ए, आगे वाला ए आर, पीछे वाला ए बाय आर. इसका प्रोडक्ट क्या दिया है? 512. मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 512 आता है. तो द प्रोडक्ट is 512, it is going to be a by r into a into ar is 512. R cancels. A into a is a cube is 512, which means a is the cube root of 512. 512 किसका क्यूब रूट है? इट इज इन पावर्स ऑफ 2. तो 8 को अगर क्यूब कर देते हो तो 512 आता है. देन 512 का क्यूब रूट 8 है. सो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी सी 8. बट एक मिनट, उन्होंने तो मिडिल टर्म पूछा है, हमें ए मिला. करेक्ट, हमारा ए वाज द मिडिल टर्म ना. राइट दैट डाउन. चलो, one in the chat box if anybody is still writing.
1 if anyone is still writing. तो पेश जल्दी जल्दी लिखो. Moving on to question number 65. In the old paper, the nth term of the AP is 7n minus 5. अब देखो nth term का फॉर्मूला दे दिया ना, खत्म है. उस क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि nth टर्म दे दिया ना, तो आपने प्रोग्रेशन दे दिया है. अगर आपने nth टर्म दे दिया है ना, मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकता हूं 7 into 1 minus 5. मैं सेकंड टर्म निकाल सकता हूं 7 into 2 minus 5. अब मैं थर्ड फोर्थ टर्म भी निकाल सकता हूं, पर जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गया ना, तो आपके पास ए और डी आ गया है. यू डोंट नीड टू कंटिन्यू दिस. 7 1s are 7, -5 is 2, 7 2s are 14, -5 is 9. तो मेरा फर्स्ट टर्म 2 है एंड मेरा कॉमन डिफरेंस 7 का है. What do you want? You want the sum of the first 20 terms. S20 चाहिए आपको, जहां A 2 है, जहां D 7 है. फॉर n is equal to 20 आपको S20 चाहिए. तो Sn of an AP का फॉर्मूला है n/2 2a plus n minus 1 into D. Sum of the 20 terms is 20/2 2 into 2 plus 20 minus 1, which is 19 into D, which is 7. Sum of the 20 terms is 10 into 19 into 7, which is 133, plus the 2 2s are 4, which is 137. 137 into 10 is 1370. The answer to that is 1370. Very basic question. Stick to your basics. Your basics are in place, nothing will move you. One in the chat box for anybody who's still writing. One if anyone is still writing. जल्दी थे.
I think that should be enough time. Moving on to the next. उस पेपर में वो लास्ट क्वेश्चन था. This is the new syllabus paper, question number 3. How many terms of the series amount to 3280? मतलब इस सीरीज की कितनी टर्म्स ऐड करूं तो 3280 मिलता है. और लिखा है ना 1 + 3 + 9 + 27. नाउ स्टेप 1, आपने जो सीरीज दी है वो कुछ भी हो सकती है. It could be an AP, could be a GP. My first job is going to be checking if it is an AP or a GP. AP 9 + 1 is 10. 10 divided by 2 3 नहीं है, 5 होता है. AP नहीं है. फिर GP 9 × 1 is 9. 9 का स्क्वायर रूट 3. परफेक्ट, GP है. अगर ये GP है तो मुझे दो चीजें चाहिए, A एंड द कॉमन रेशियो 3. फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है. आपने मुझे सम भी बता दिया है 3280. then can I say that the sum up till the nth term of a progression is given by A r raised to n - 1 upon r - 1. अब मेरे पास n छोड़ के बाकी सब है. करेक्ट, तो कर दो सब्स्टिट्यूट. I will say that 3280 is equal to A, which is 1, R, which is 3 raised to n upon 3 minus 1, which is 3280 is equal to 1 into anything is still the same value divided by 2. 3280 multiplied by 2, 3280 multiplied by 2 is 6560 is equal to 3 raised to n minus 1. 6560 plus 1 is 6561 is 3 raised to n. If the right is a power of 3, the left should also be a power of 3. Check करते हैं ये 5 3 की कौन सी पावर है. 3 स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, रेज टू 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8. yes, this is 3 raised to 8 is 3 raised to n implies n is equal to 8. ये सम 8 टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन का है. बेसिक, वेरी बेसिक. योर बेसिक्स नीड टू बी इन प्लेस. I've said this before and I'm saying this repeatedly. Core basics strong कर लो. कुछ भी पूछ ले आंसर कर पाओगे. You can identify if this is an AP or a GP by 3 टर्म उठा लो. 139 पहला और लास्ट का एवरेज ले लो. अगर बीच का टर्म आया तो AP. 9 + 1 is 10 डिवाइड बाई 2 5 नहीं है. अगर पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो और अगर बीच का टर्म आया तो GP. 9 × 1 is 9, स्क्वायर रूट is 3. तो ये GP है, AP नहीं है.
One in the chat box if anybody is still writing. One if anyone is still writing. One in the chat box for anybody who's still writing. One if you are still writing. Chalo. Moving on to question number 15, same paper. If A, B, C are in an AP, then what is the value of A minus B upon B minus C? A, B, C क्या है? A, B, C are an arithmetic progression. अगर A, B, C are an arithmetic progression, तीन वैल्यू assume ही कर लो, कोई भी तीन वैल्यू that are in an AP. If I assume any three values that are in an AP, let me assume 1, 2, 3. तो A 1 है, B 2 है, C 3 है. So that's 1 minus 2 upon 2 minus 3, which is minus 1 upon minus 1, which is 1. The answer to this is 1. One in the chat box if anybody is still writing. One if anyone is still writing. This is it. This was the last question here. अब old syllabus में देखोगे तो they have asked quite a few questions, which is 1, 2, 3, 4 questions, and new syllabus में they've only asked 2. So new में 2, old में 4. These are the kind of questions that they're expecting from you in the new syllabus. I hope I'm not missing out on anything. Nope, nothing so far. So let's continue into bit paper questions. Let's see what the bit paper sheet has. Form APGP. Question number 4. What does question number 4 say? Question number 4 says that if
x minus 1, x plus 1 and 2x plus 3 are in an arithmetic progression. ये तीन टर्म एपी में है. What do we know about an AP? Well, what we know about an AP is कि अगर तीन टर्म एपी में है तो बीच वाला टर्म पहले और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन होता है. तो अगर ये तीन टर्म एपी में है तो ये बीच वाला टर्म x plus 1, फर्स्ट टर्म which is x minus 1, लास्ट टर्म which is 2x plus 3 का क्या है? का अरिथमेटिक मीन है. In the next step, cross multiply. 2 times of x plus 1 is x minus 1 plus 2x plus 3. So 2x plus 2 is equal to x minus 1 plus 2x plus 3. 2x plus 2 is x plus 2x is 3x plus 2. 2x to the other side, 2 here, 2 minus 2 is 3x minus 2x. 0 is 3x minus 2x. X is equal to 0. The value of x is 0. Write that down quickly. I think that is enough time. Moving on to the next, which is question number 5. The eighth term of the series 256, 128, 64 is, ये सीरीज है, आठवीं टर्म चाहिए इसकी. सो आपको 256 is the first term, 128 is the second, 64 is the third. Can I ask you one thing? 8 टर्म ही तो निकालनी है, खुद से क्यों नहीं निकाल सकते? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एथ. कैसे? डू यू नोटिस टर्म्स आधी होती जा रही हैं? तो कंटिन्यू करो आधे करते हुए. विच इज 64 का आधा 8, करेक्ट? सॉरी, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2. So the eighth term of this progression is going to be 2. Or you can stick to your typical formula. A क्या है? A 256 है. कॉमन रेशियो क्या है? हाफ है. हर एक टर्म आधा होते जा रहा है. Which term are you looking for? The eighth term. So Tn is AR raised to n minus 1. So the eighth term is 256 into R, which is half, raised to n minus 1, which is 8 minus 1, which is
7. Eighth term is 256 into 1 raised to 7 is 1. 2 raised to 7 is 128. Eighth term is 2. The answer is going to be 2. क्योंकि जीपी है ना, चेक मतलब चेक कर लो, अगर ले सकते हो डिफरेंस तो डिफरेंस लेके चेक कर लो। 256 प्लस 64 क्या आता है? 256 प्लस सॉरी प्लस 64 320। 320 को 200 डिवाइड करोगे तो 160 आता है। मिडिल टर्म 160 है क्या आपका? नहीं ना, तो ये एपी नहीं है, ये जीपी है। कैसे पता चलता है? 256 मल्टीप्लाइड बाई 64 और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना, 128 आएगा। दैट इज इट्स जीपी। और क्या है, देख के ही पता चलता है ना कि टर्म्स आधी होती जा रही है, इसीलिए हमने जीपी में कंसिडर किया, इसे एपी में नहीं। इज दैट क्लियर जतिन? I think that is enough time to write that question. Moving on to the next, which is question number 23. The sixth term of an AP 258 is, AP है 258 और इसका क्या चाहिए आपको? सिक्स्थ टर्म। अब एपी है तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। 2 में 3 5, 5 में 3 8, तो ये हुआ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। छठवां टर्म चाहिए। ये 3 3 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो खुद ही निकाल लो ना। 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 3 इज 14, 14 प्लस 3 इज 17, आंसर 17 है। या फिर गो बैक टू योर टिपिकल, विच इज ए क्या है? 2, कॉमन डिफरेंस क्या है? 3, कौन सी टर्म चाहिए? 6। nth टर्म इज a plus n minus 1 into d. The sixth term of the progression is 2 plus 6 minus 1 into 3. The sixth term of the progression is 2 plus 5 into 3 is 15. The sixth term of the progression is 17. 17 answer. Write that down quickly. वो लिख के 24 ट्राई कर लो।
ये आना चाहिए। आई डू इट फॉर यू अगेन द सेम। अब देखो वो जो भी पूछ रहा था सर कैसे जज किया। सीक्वेंस है 16, 8, 4, 2। देखो देख के ही पता चलता है कि वो आधा होते जा रहा है, तो जीपी है। फिर भी ना चेक करना है तो 16 + 4 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10, 8 नहीं आता। 16 इंटू 4, 16 4 × 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 आता है, इसीलिए ये जीपी है। अगर जीपी और आधा होते जा रहा है ना, सातवां टर्म चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही चलते चलते 7 टर्म निकाल लो। फिर 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, आधे का आधा 1/4। तो द आंसर इज गोइंग टू बी बी, 1/4। और अगर निकालना है तो खुद भी निकाल सकते ही हो, विच इज यू आर गोइंग टू से ए हियर इज 16 एंड द कॉमन रेशियो इज हाफ। हर एक टर्म आधा होते जा रहा है। यू वांट द 7th term, so the nth term is a r raised to n minus 1. The 7th term is 16 half raised to n minus 1, which is 7 minus 1, which is 6. The 7th term is 16 into 1 raised to anything is 1. 2 raised to 6 is going to be a total of 64, if I'm correct, because 5 is 32, 64, correct. So the 7th term is 16 ones are, 16 fours are, which is 1/4. Write that down quickly. ये लिख के 38 टर्म सम ट्राई कर लो, सेम है ऑलमोस्ट। C seems to be the common call. मैं कर देता हूं फटाफट अगेन। एक्चुअली निकाल सकते हो या फिर फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। द 7th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब उन्होंने 4 टर्म तो दे ही चुके हैं, विच इज 7, 10, 13, 16। कितने से बढ़ते जा रहा है? इट इज इंक्रीजिंग बाय 3। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 3 से बढ़ते जा रहा है तो बढ़ाते जाओ ऐसे। 19, 19 + 3 is 22, plus 3 is 25. The answer is going to be C, 25. Correct? Or what you can also do is, you can use the formula. A here is 7, common difference is 3. कौन सी टर्म चाहिए? 7th term. The nth term is A plus n minus 1 into D, which is the 7th term is 7 plus 7 minus 1, 6 into 3. The 7th term is 6 3s are 18 plus 7 is 25.
The seventh term is 25. For AP calculator calculation, I think was A plus D. So 7 plus 3, 10, 13, 16, fourth term, fifth, sixth, seventh, 25. सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये वाला आप ही कर दो, मैं नहीं कर रहा। द 10th टर्म मांगा है, फटाफट करके दे दो। डी सीम्स टू बी द कॉमन कॉल। फर्स्ट टर्म 3 है, 3 का डिफरेंस है, उनको 10वीं टर्म चाहिए। तो अगर कैलकुलेटर में करोगे तो 3 प्लस 3, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 10वीं टर्म 30 है। तो द आंसर इज गोइंग टू बी डी, 30। अनदर सिमिलर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट, ये प्रोड्यूस लिखा है, प्रोडक्ट होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 125। द मिडिल टर्म इज, अगेन द सेम जो थोड़ी देर पहले किया था। 3 टर्म अगर जीपी में होता है ना, तो हम एक को ए, आगे वाले को ए आर, फिर ए बाय आर अज्यूम करते हैं। द प्रोडक्ट शुड बी 125। इफ द प्रोडक्ट इज 125, ए बाय आर, ए, ए आर 125 होता है। आर एंड आर कैंसल्स, a into a is a cube is 125. If a cube is 125, a is 5. बट एक मिनट, उन्होंने मिडिल टर्म मांगा था, करेक्ट? मेरा मिडिल टर्म ही 5 है, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 5।
which term 128 is of the progression 1248. मतलब 128 1248 का कौन सा टर्म है? तो ये भी कैलकुलेटर में चाहिए तो कर सकते हो। कैसे? पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एपी है या जीपी है। वेल देख के ही पता चलता है। क्या पता चलता है? दैट दिस प्रोग्रेशन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे? वेल सिंपल, फॉर अ रीजन दैट डबल होते हुए दिख रहा है। अगर एपी होता 4+1 5 का आधा, 2 नहीं होता, बट 4 into 1 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू से कि ये जीपी है जिसका a1 है एंड कॉमन रेशियो 2 है, डबल होते जा रहा है। आपने मुझे एक टर्म भी दे दिया है 128, पूछ रहे हो 128 इसका कौन सा टर्म है? So the answer is going to be nth term of a geometric progression is ar raised to n minus 1. 128 is equal to 1 into 2 raised to n minus 1. So that is 128 is 2 raised to n minus 1. 128 2 की कौन सी पावर है? 2. 2 3 4 5 6 7 8 7 7th पावर है। तो अगर 128 2 की 7th पावर है, 2 raised to 7 is 2 raised to n minus 1. Two values are equal, bases are equal, powers have to be equal. 7 is n minus 1, n is equal to 8. या फिर सेम चीज कैलकुलेटर में है, एंड दैट इज पहले r एंड फिर a, so that is 2 into 1. Second term, third term, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Eighth term is 128. Write that down quickly. Moving on to question number 2. We are into the true or false section. MCQ खत्म हो चुका है. What does the question say? The question says that 1 plus 2 plus 3 up till n is 231. Then what is the value of n? Is it 21? Well, देखो, when you add 1, 2, 3 ना, you are adding an AP. I agree, but ये special AP है. And this AP is nothing else but the sum of the first n natural numbers. And the formula for the sum of the first n natural numbers is n into n plus 1 divided by 2 is 231. Cross multiply, n into n plus 1 is 231 into 2, which is 462. Now I need to find the value of n. How will I do that? ये खोल मत देना, quadratic हो जाएगा. Look at the two numbers. Understand what they are in their core. In their core, they are basically two consecutive natural numbers. ये दो consecutive numbers हैं. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे सिंपल, 462 को दो consecutive numbers में तोड़ दो. कैसे? 462 का स्क्वायर रूट ले लो.
The square root of 462 works out to be 21.49. So 21 and 22 check kar lo. 21 into 22 is 462. Fantastic. तो इसे लिख दो n into n plus 1 is 21 into 22. दोनों में बड़ा कौन है? n plus 1. दोनों में बड़ा कौन है? 22. n becomes what? n becomes 21. So the answer to this is yes, n is 21. It is the sum of the first 21 natural numbers. Write that down, please. अब अगर ये हो गया होगा तो लगे हाथ बेसिक्स में सम ऑफ द फर्स्ट 10, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 10 एंड क्यूब ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स भी लिखी लो. So this is going to be sum of the first 10 natural numbers is n into n plus 1 divided by 2. Sum of the squares of the first 10 natural numbers is n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. And sum of the cubes of the first 10 natural numbers is n into n plus 1 divided by 2, the whole square. लिख लो ये फटाफट. Coming back to the question. Question number 10. The sum of the first 6 terms of an arithmetic progression of which is an AP is. Sir, ratio and proportion is already taught me yesterday session. Yes. I finished ratios yesterday. 6420 is 12. क्या पूछा है? The sum of first 6 terms. आपको पहले 6 टर्म का सम पूछा है. So to begin with, A here is 6.
कॉमन डिफरेंस इज -2, घटता हुआ प्रोग्रेशन है ये। आपको पूछा है सम कितने टर्म्स का, 6 टर्म्स का। तो अगर आपको पूछा है सम 6 टर्म्स का, तो आई विल से Sn इज n/2 2a plus n minus 1 into d. So the sum of 6 terms is 6/2, 2 into 6 plus n minus 1, which is 6 minus 1 into d, which is -2. So sum of the 6 terms is 6/2 is 3 into 6 2s are 12, 6 minus 1 is 5, 5 2s are 10. Sum up till the 6th term is 2 into 6, which is 12. And the answer is going to be true. Write that down. कहां पे? 6 minus 1 is 5, 5 2s are 10, 6 2s are 12. ओ अच्छा सॉरी, 6 आता है, 6 आएगा, फॉल्स है। सॉरी अबाउट दैट, लिख लो। हाँ हाँ, वैसा करना है तो भी कर सकते हो, आप निकाल दो, क्योंकि 6 ही टर्म चाहिए उनको, तो 4 टर्म दिए और 2 टर्म निकाल के ऐड कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा, चलेगा। Quickly come to the next question, which is question number 27. The series 1, 11, 111, 111 is an AP? Definitely not. क्यों? चेक कर लो ना, फर्स्ट और थर्ड ऐड करके आधा कर दो, सेंट्रल टर्म आता है क्या देखो, 1 plus 111 divided by 2 is 112 divided by 2, which is 2 5s are 10 and 2 6s are 12. मिडिल टर्म 56 होना चाहिए, 56 नहीं है, इसका मिडिल टर्म 11 है, then this is not an arithmetic progression. The answer is going to be false. Question number 28. The 7th term of the progression 3 minus 9 27 is, देखो ध्यान दो, एक टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये तभी होता है अगर प्रोग्रेशन जीपी है।
एपी में ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स नहीं आते, जीपी में ही आते। सेकेंड वे ऑफ चेकिंग इट, चेक कर लो ना। 3 + 27 इज 30, 30 डिवाइड बाई 2 इज 15, -9 नहीं। हाँ, 27 इंटू 3 इज 81, 81 का स्क्वायर रूट इज +or -9, वो चलेगा। So this is a geometric progression where the first term is 3 and the common ratio is -3. आप जानना चाहते हो कि सेवेंथ टर्म 21787 है या नहीं है। अब दो ऑप्शन है, खुद से ही निकालते जाओ सेवेंथ टर्म, या फिर what you can do is use the formula. You want to find the nth term for n is 7. Tn is ar raised to n minus 1. So the seventh term is 3 into -3 raised to 7 minus 1. The seventh term is 3 into -3 raised to 6. थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि जब एक नेगेटिव नंबर को इवन पावर से रेज करते हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो आई हैव अ -3, इफ आई रेज इट टू स्क्वायर कर दूं तो पॉजिटिव, क्यूब कर दूं तो नेगेटिव, रेज टू 4 पॉजिटिव, रेज टू 5 नेगेटिव, रेज टू 6 पॉजिटिव। 729 into 3 is going to be 1287. The seventh term is 2187. So is that true? Yes. So the answer is going to be that this statement is true. देख लो फटाफट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मैं इसके बाद मतलब मैथ्स खत्म करके, क्योंकि 3 दिन है मेरे पास, 7, 8 और 9। तो आज 7 है, कल 8 है और परसों 9 है। तो आज अब इन सम टाइम एपीजीपी खत्म करके मे बी ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद वील कम बैक एंड वी विल ट्राई टू फिनिश मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एंड सेट थ्योरी प्रॉब्ली एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 चैप्टर कर पाए तो अच्छी बात है। वो करने के बाद कल वी विल कम बैक एंड कंटिन्यू विद डूइंग, अगर मैथ्स में कुछ छूट जाता है तो, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वो करने के बाद वील एंटर स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स एंटर करने के बाद वी विल go back to back exactly in the same way in statistics. I hope that is clear. 1 + 3 + 5 + 7 ऐड करते जाना है, कहां तक? 2n-1 तक। मतलब बेसिकली ये nth टर्म था, उन्होंने लिख दिया, और ये ऐड करोगे तो n² आता है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब ये प्रोग्रेशन अगर ऐड करोगे अप टिल द nth टर्म तो वो n² बन जाता है। चेक कर लेते हैं। a is 1,
and common difference is 2. आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो. कहां तक? nth term तक. So I am going to say that sum up till the nth term of the progression is n by 2 2a plus n minus 1 into d. So the sum up till the nth term is n by 2 2 into 1 plus n minus 1 into d, which is 2. Sum up till the nth term is n by 2 2 plus 2n minus 2 2 cancels. Sn is n by 2 2n 2 and 2 cancels. Sn is n square. Is that true? Yes. So the answer to this is going to be true. हाँ, वो भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म है. You can do that also. That will be 1 plus 2n minus 1 into n by 2. This is question number 30. Moving on to the next. I guess that is it. That is it about AP GP. That was the last question in AP GP or progressions. So with this, progressions also is done. So अगर इतना आता है, this will cover a good 60-70% of all AP GP questions that they have been asking. I hope that is okay. So, 4 बजने में 5 मिनट है. I would suggest let's take a break and then settle down and then start with whatever we are going to do after this. Is that okay with everyone? Fine. So it is 53. Settle down in exactly half an hour. Is this clear? 30th sum का क्या चाहिए? Solution. ये लो solution. Yes, Rupesh, 425. Settle down.
चलो, welcome back everyone. Let us very quickly continue into what we are going to do now. The next chapter that I want to pick up is simple and compound interest along with annuity. Correct? In totality, also known as mathematics of finance. There are very few standard formulas and questions in this, to be very honest. Let's start with the most basic, simple interest. Simple interest, the first basic formula is simple interest, which is PNR upon 100. अगर ये 100 इंटरेस्ट में इंक्लूड करके लिख दिया तो ये बन जाता है PNI. अगर अमाउंट चाहिए तो अमाउंट के दो फॉर्मूलाज हैं. फॉर्मूला नंबर 1, अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस NR अपॉन 100. अगर इंटरेस्ट के साथ लिखा तो प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस NI. सिंपल इंटरेस्ट में एक डबलिंग ट्रिपलिंग रूल वाला क्वेश्चन है. What is the doubling tripling rule question? That if money is becoming x times itself, तो कुछ प्रिंसिपल डाला बैंक में, it is becoming x times itself in a period n at a rate of r, then the number of years in which this happens is number of times minus 1 upon r into 100. This is pretty much it about simple interest. Let's come to compound interest. अब compound interest में क्या क्या है? Am I audible to people? Can you all hear my voice? सानिका तुमच्या एंडला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, चेक करा. Let's come to compound interest. In compound interest, we start with the compound interest formula. The compound interest formula is principal into 1 plus I raised to n minus 1. Amount का formula is principal into 1 plus I raised to n. There is no shortcut formula for money becoming x times, but there is a shortcut formula for money doubling and money tripling. So when the principal doubles itself in a period n at a rate of r, then there is something called as the 72 rule that says that this happens in 72 by r years. This is known as the 72 rule. Also, there is a tripling rule. What is the tripling rule? If money is put at compound interest and it triples itself at a period of n at a rate of r, then I will say that n is 114 by r, also known as the 114 rule. Simple. And what is effective rate of interest also? Very rare के question पूछेंगे उस पे, but there is an effective rate of interest वाला section. What is effective rate of interest? जब पैसा non-annually रखा जाता है, when compounding happens more than once a year, तो आपको जो interest है उससे ज्यादा मिलता है. कितना ज्यादा वो इफेक्टिव रेट बताता है. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 plus I by k raised to k minus 1 into 100. Well, इसी में अगर फिर आप नॉन एनुअल कंपाउंडिंग लिख रहे हो तो लेट्स राइट डाउन द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर नॉन एनुअल कंपाउंडिंग. अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 plus I by k raised to nk. Compound interest is principal into
1 plus I by k raised to nk minus 1. After this, we move into annuity. What is annuity? Annuity is recurring payments made over a fixed period for a fixed sum is annuity. In annuity, we do two values, future value and present value. Future value of an annuity is periodic payment divided by I into 1 plus I raised to n minus 1. और वही अगर present value of an annuity मांगो तो it is periodic payment divided by I into 1 minus 1 plus I raised to n but negative. And this is the present value of an to know about simple and compound interest. 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिख लो, जिसमें सिर्फ बेसिक वाले ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा. एन्युटी इसी के नीचे लिख देता हूं ताकि आई कैन जूम वेल. Write that down very quickly. E is known as the effective rate of interest. जब नॉन एनुअल कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग साल में एक से ज्यादा बार होता है, तो आपको कमिटेड रेट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है. मतलब अगर कमिटेड रेट लेट्स से 10% है तो 10 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 12 है तो 12 से थोड़ा ज्यादा मिलेगा. अब कितना ज्यादा विल डिपेंड ऑन
द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैसे कंपाउंड कर रही हो, क्वार्टरली कर रही हो या हाफ ईयरली कर रही हो या मंथली कर रही हो, दैट इज व्हाट विल डिपेंड ऑन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक्चुअली बताता है कि एक्चुअली क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। You don't have, then in that case you don't have annuity, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्युटी नहीं है। चलो, वन इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी स्टिल राइटिंग, वन इफ एनीवन इज स्टिल राइटिंग। लोकेश, डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्लिम टू नन है। चाहिए तो लिखवा देता हूँ, बट क्वेश्चन आने के चांस स्लिम टू नन है। ये इतना लिख लो, फिर मैं डिफरेंस वाला भी लिखवा देता हूँ फॉर्मूला। चलो, वन इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी स्टिल नीड्स टाइम, वन इफ एनीवन स्टिल नीड्स टाइम। आ जाओ फिर, लेट्स स्टार्ट। इफेक्टिव रेट के नीचे किसका फॉर्मूला है? इफेक्टिव रेट के नीचे एन्युटी का फॉर्मूला है। ये नॉन एनुअल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, व्हेन कंपाउंडिंग इज डन मोर देन वंस अ ईयर। कंपाउंडिंग मोर देन वंस अ ईयर।
Let's start with the old paper. In the old paper, क्वेश्चन नंबर 61 से चालू होता है. इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड लाइक आई सेड, इसमें भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखना, बिकॉज दैट इज व्हाट दे विल आस्क. दे विल आस्क यू वेरी 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 बेसिक क्वेश्चंस. हाँ हाँ, एक पेज छोड़ते रहो, जरूरत पड़ी तो आएंगे, वैसे नहीं पड़ेगी. एक पेज छोड़ते रहो. Question number 61. The compound interest on rupees 4,000 for 2 years at a certain rate of interest amounts to 840. Rate of interest क्या है बताओ? The compound interest on 4,000. तो 4,000 पे क्या मिल रहा है? Compound interest. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए. और वो compound interest बन कितना जाता है? 840. Do not get confused with the words amounts to. Amounts to का मतलब amount नहीं होता. The compound interest on 4,000, 4,000 पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के लिए. और उस कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, उस कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट 840 रुपए हो जाती है. तो यू कैन आइदर डू दिस विद द फॉर्मूला और यू कैन इवेल्युएट ऑप्शंस. इफ यू आर गोइंग टू डू दिस विद द फॉर्मूला, principal is 4,000 rupees. 4,000 is the principal borrowing for a period of 2 years. Rate नहीं पता, exactly वही निकालना है. And interest कितना हो जाता है? The compound interest is 840. What is the formula for compound interest? Compound interest is principal into 1 plus I raised to n minus 1. तो 840 रुपए इज 4,000 इंटू 1 प्लस आई रेज टू 2 minus 1. 4,000 goes to the other side and divides. 840 divided by 4,000 is 0.21. So 0.21 is 1 plus I square minus 1. Minus 1 goes to the other side and adds and becomes 1.21 is 1 point plus I square. Taking square root of 1.21 is 1 plus I. 1.21, so square root is 1.1. 1.1 is 1 plus I. 1 goes to the other side. 0.1 is I. अगर I 0.1 है तो रेट 10% है. The rate of interest is 10%. That is going to be the answer. 10%. अगर दूसरे कॉमन सेंस से यूज करना है, 4,000 पे 840 इंटरेस्ट मिल रहा है. तो अगर 4,000 पे 840 इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब टोटल अमाउंट 4,840 हो रही है. तो एक काम करो, कीप इंक्रीमेंटिंग द मनी फॉर 2 years. चेक करो कहां 4,840 मिलता है. 4,000 प्लस 8% फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस 4,000 प्लस 8% फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस 8% फॉर द सेकेंड. फोर 665.6 आता है, विच इज नॉट द आंसर. मैं डायरेक्टली 10% के लिए करके देता हूं, बाकी चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेना. 4,000 प्लस अनदर 10% प्लस अनदर 10% फॉर द सेकेंड. 4,840 आता है, मतलब 4,000 रुपीज प्रिंसिपल था आपका और 840 इज द इंटरेस्ट, सो बिकम्स 4,840. इज दैट क्लियर? फटाफट लिख लो.
Chalo, one in the chat box if anybody is still writing. One if you are still writing. लिख लो. Chalo, I think that is enough time. Moving on to the next, which is question number 67. A person deposits 2,500 at 7% simple interest for 3 years. The amount in rupees he will get back after 3 years is, a person deposits 2,500 at 7% per annum simple interest. A person deposits 2,500. तो प्रिंसिपल 2,500 हो जाता है, करेक्ट, एट अ रेट ऑफ 7%. तो अगर रेट 7% है तो पीरियड 3 साल. द अमाउंट ही विल गेट बैक आफ्टर 3 years. 3 साल बाद का अमाउंट पूछा है. अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100. अमाउंट इज 2,500 into 1 plus 3 into 7 upon 100. Amount is 2,000 करके डायरेक्टली लिख दूं? नहीं, ठीक है, लिख देता हूं. 2,500 into 7 3s are 21 डिवाइड बाय 100 is 0.21. तो 1.21 हो जाएगा. So amount is 1.21 into 2,500, which is 3,025. 3,025 रुपया हो जाएगा अमाउंट. सेम क्वेश्चन अगर कैलकुलेटर में करना है तो आपको अमाउंट पूछा गया है तो क्या बोलोगे? 2,500 पे 7% इंटरेस्ट होता है 175 रुपया. 175 अगर 3 साल के लिए मिलता है तो 525 हो जाता है. 525 इंटरेस्ट प्लस 2,500 प्रिंसिपल इज 3,025. सेम आंसर. Very basic questions is what they're asking in the exam.
I think that is enough time. These were the only two questions that were asked in the old syllabus attempt. Continuing to the new syllabus attempt, question number 14. What does the question say? A sum of money will yield meaning give, 1407 as interest. तो कोई पैसा है जो इंटरेस्ट कितना देगा? 1407 रुपया in 1.5 years at 14% simple interest per annum. तो उनको बताओ कि what will be the sum, what sum will yield. So प्रिंसिपल बताना उनको, प्रिंसिपल पता नहीं है, क्या मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1407 इन अ पीरियड ऑफ 1.5 year. तो मैं ना 1.5 साल लिख रहा हूं क्योंकि 1.5 से बेटर ये है, at a rate of 14%. So I will say simple interest is PNR upon 100. So simple interest, which is 1407, is principal into 1.5 into 14 upon 100. Cross multiply 140700 divided by 1.5 into 14 is the principal. या फिर इसको ऐसा रखे into 100 लिख दो. So your answer is 1407 into 100 divided by 1.5 divided by 14. The answer is 6700. So the principal value was 6700. 6700. Very basic and very simple question. See, because the principal is asked, doing this in the calculator will be a little difficult. उल्टा करना इसीलिए. अगर प्रिंसिपल दिया होता और इंटरेस्ट पूछा होता तो कर सकते. One in the chat box if anybody is still writing. One if you're still writing. Chalo. Moving on to the next. Question number 20. A sum of money becomes 3364 at 16% compounded annually for 2 years. The sum of money is. A sum of money becomes 3364. So कोई sum of money है, let's call it P. मतलब principal पता नहीं है. It becomes, what does it become? 3364 in a period of 2 years at a rate of 16%. Compounded annually. So compound interest मिल रहा है और annually मिल रहा है.
then the sum of money is, तो principal मांग रहे हैं. Then can I say here in this data, principal नहीं पता, period 2 साल, rate 16, amount that it becomes is 3364. So I will say amount is principal into 1 plus I raised to n. अब rate 16 है तो interest 0.16 होगा. So this is going to be amount which is 3364 is equal to principal जो नहीं पता 1 plus interest 0.16 raised to n which is 2. 3364 is principal into 1.16 square. So this is going to be 1.16 cos square. Sorry. Or is 1.16 cos square will go to the other side and divide. And multiply by 3364. So the answer is 2500. The principal borrowing is 2500. इसमें अगर किसी को कैलकुलेटर से करना है तो ऑप्शन से जा सकते हो. मतलब अगर 2200 रुपया 2 बार 2 साल के लिए ना, तो 2 बार 16% से इंक्रीमेंट होता है. डज इट बिकम 3364? नहीं, मैं डायरेक्ट लैस वाला कर रहा हूं. 2500 जब इंक्रीमेंट होता है 16% से प्लस वापस 16% से, does it become 3364? Yes. Then the answer is 2500. चलो, I think that is enough time to write. And this is it. ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस, उन्होंने ओल्ड सिलेबस में 2 एंड न्यू सिलेबस में भी 2 ही क्वेश्चंस पूछे. हैविंग सेड दैट, न्यू सिलेबस में एन्युटी इंट्रोड्यूस करके भी एन्युटी पूछा नहीं है. तो नाउ स्टूडेंट्स विल से सर फिर हमको भी नहीं पूछेंगे क्या? देखो एक बात समझ लो, अगर मुझे पता होता ना क्या पूछने वाले हैं क्या नहीं पूछने वाले, तो मैं वही 50 क्वेश्चन लेके पढ़ा के खत्म कर देता. मुझे भी नहीं पता ना. आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन कि ये हुआ है. यू टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर. सो मूविंग ऑन टू, आ जाओ देखते हैं व्हाट डज द बिट क्वेश्चंस है. Coming to the first question in the bit questions, which is question number 3. What does question number 3 say? A sum will double itself at simple interest per annum in 8 years. The simple interest is. अब ये डबलिंग वाले क्वेश्चन ना 2 मेथड में कर सकते हो टिपिकली. नहीं याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है. कुछ तो प्रिंसिपल रखा है, वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. कितने साल में है? 8 साल में. क्या रेट है वो बताना है उनको. अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100. अब अमाउंट क्या बन रहा है? डबल द प्रिंसिपल. 2P इज P इंटू 1 प्लस NR
अपॉन 100. कैन आई से p p कैंसल्स, बचता क्या है 2 is 1 plus nr upon 100. 1 goes to the other side and subtracts. 1 is nr upon 100. But एक मिनट, n तो पता है 8 है, तो कर दो सब्स्टिट्यूट. 1 is 8r upon 100. क्रॉस मल्टीप्लाई. 100 upon 8 is r. r is equal to 12.5. Rate is 12.5%. या फिर you can use the direct formula, and that is money is doubling itself. So number of years is number of times minus 1 upon r into 100. So number of years is 8. Number of times is double divided by the rate into 100. So you get r is 1 upon 8 into 100. R is 100 divided by 8, which is 12.5. यहाँ भी 12.5 आ जाएगा. Either way, whatever you want to remember. Pull a 1 in the chat box if anybody still needs time. 1 if anyone still needs time. Or I'll continue. Red वाला is a shortcut formula. अगर लेक्चर में बैठे थे तो मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला लेक्चर में कराया था. And the formula is that the number of years it takes money to become x times का फॉर्मूला है. n is number of years is equal to कितनी टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है तो 2, ट्रिपल हो रहा है तो 3, माइनस 1 अपॉन r इंटू 100. तो आप कितने साल है बता दो, मैं रेट दे दूंगा. आप रेट दे दो, कितने साल है बता दूंगा. ऑब्वियसली प्रोवाइडेड यू टेल मी कितने टाइम्स हो रहा है पैसा. 2 टाइम्स हो रहा है तो x is 2, 3 टाइम्स हो रहा है तो x is 3 एंड सो ऑन. नहीं, इट इज नॉट द सेम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ सिंपल के लिए.
If I is the simple interest, R is the rate and T is the time. हम n लिखते हैं, उन्होंने बोला T है time. T being the principal, then it is expressed as. See, I know if I is the simple interest is P n R upon 100. Correct? ये अपना formula है. Now they are saying simple interest is I. So I is, P is the principal, n के जगह T, rate के जगह R upon 100. तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? I is equal to 100 PRT. नहीं, I is equal to PRT upon 100. बेसिकली बस फॉर्मूला पूछा है क्वेश्चन में. they have said सिंपल इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज पी एन आर अपॉन 100. उन्होंने क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट को आई लिख दो, तो लिख दिया. सिंपल इंटरेस्ट को सिर्फ आई, रेट को कैपिटल आर, तो रेट को छोटे आर की जगह कैपिटल आर, पीरियड को हम एन लिखते हैं, उन्होंने टी लिख दिया, तो एन के जगह पे टी, और लास्टली बचा प्रिंसिपल को पी, तो पी आर टी अपॉन 100. दिस इज द फॉर्मूला ना, इंटरेस्ट ERT upon 100. Is that clear, Khushbu? Chalo, moving on to the next, which is question number 12. The compound interest on 4,000 for 2 years at 5%. ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर सकते हो. 4,000 पे 2 साल के लिए 5% मिल रहा है, तो 4,000 प्लस 5% फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस 5% फॉर द सेकेंड, 4,410 हो जाता है. और मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, तो इसमें से आपका 4,000 हटा दो, 410 रुपया इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. या फिर राइट इट डाउन. प्रिंसिपल इज 4,000, पीरियड इज 2 years, रेट इज 5, रेट 5 है तो इंटरेस्ट 0.05 है. सो अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन. अमाउंट इज, सॉरी आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट चाहिए ना, इंटरेस्ट निकाल के दे देते हैं. Compound interest is principal into 1 plus I raised to n minus 1. So compound interest is 4,000 into 1 plus I, which is 0.05 raised to 2 minus 1, which is 4,000 into 1.05 square minus 1. So 1.05 square it, subtract 1 from it, multiply it by 4,000. So the answer is 400. Yes. $4,000 plus 5% for the first year plus 5% for the second year. 4,410, उसमें से 4,000 निकाल दो, 410. $0.05 क्योंकि 5% है ना, 5% मतलब 5 out of 100, which is 0.05. रेट 5 है तो इंटरेस्ट 0.05 है.
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? फॉर्मूला लिखा है उन्होंने सिर्फ, बस नोटिफिकेशन चेंज कर दिया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज PNR अपॉन 100। उन्होंने बोला दैट इफ आई इज सिंपल इंटरेस्ट, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपल इंटरेस्ट एज SI, हम आई लिख देते हैं। आर इज द रेट, तो छोटे आर की जगह बड़ा आर लिख देते हैं रेट। टी इज द टाइम पीरियड, हम यूजुअली टाइम पीरियड को एन लिखते हैं, उन्होंने बोला है टी लिख दो, तो टी इज द टाइम पीरियड। देन व्हाट इज आई एक्सप्रेस्ड एज? आई इज एक्सप्रेस्ड एज PTR अपॉन 100, बेसिकली PRT अपॉन 100 हो जाता है, विच इज द सी ऑप्शन। बस फॉर्मूला लिखा है उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। $4000 पे आपको 2 साल के लिए 5% इंटरेस्ट मिलता है। तो 4000 पहले साल में 5% इंक्रीमेंट होगा, तो 4200 हो जाएगा, प्लस वापस 5% इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 4410 हो जाएगा। इसमें से प्रिंसिपल है 4000 का, तो सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से 4000, जो बचता है वो इंटरेस्ट है। 410 रुपए बचा, विच इज दी इंटरेस्ट। इज दैट अंडरस्टूड प्रियंका? Coming to the next, that is question number 21. A man deposited a sum of money to a bank at 9% per annum simple interest. The rate is 9%. The total interest that he will get at the end of 5 years is 1620. The deposited amount is, now what do you mean by deposited amount? अमाउंट मतलब अमाउंट मत अज्यूम कर लेना, अमाउंट मतलब वो आपसे डिपॉजिट किया हुआ प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहे हैं। तो रेट इज 9%, पीरियड इज 5। आपने पैसा सिंपल पे रखा है, कंपाउंड पे? सिंपल पे। कितना है आपका सिंपल इंटरेस्ट? 1620 रुपया। तो आपको डिपॉजिट किया हुआ प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग यू द प्रिंसिपल। देन आई एम गोइंग टू से दैट amount simple interest is PNR upon 100। तो आपको जो 1620 रुपए इंटरेस्ट मिला है इस प्रिंसिपल इंटू 5 इंटू 9 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई 1620 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9 इज द प्रिंसिपल। सो 1620 into 100 divided by 9 5s are 45, which is 3600. 36 रुपया is the principal.
Chalo, moving on to the next, which is question number 29. The simple interest on rupees 100 at the rate of 5% per annum for 5 years. The simple interest on 100. तो 100 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, रेट 5 है, for a period of 5 years. I'm going to say simple interest is PNR upon 100. So the simple interest is 100 into 5 into 5 upon 100. So the simple interest is 25. That is question number 29. Moving on to the next, question number 38. A person deposits rupees 2000 at 6% per annum, simple interest, for 3 years. The amount he will get back after 3 years is. So a person deposits a principal of 2000 in a period of 3 years at a rate of 6%. What is the amount that he gets? Amount is principal into 1 plus NR upon 100. So amount is principal into 1 plus 3 into 6 upon 100. Amount is 2000 into 6 3 is 18, divided by 100 is 0.18, 1.18. So the amount that it becomes is 18 2 is 36. So 1.18 into 2000 is 2360. So 2360 is the answer.
That was question number 38. Moving on to the next, which is question number 46. What does question number 46 say? In a certain time, 1400 becomes 1848 at 8% per annum simple interest. When 2100 will become 2604 at the same time, the rate of interest is 1400 becomes 81848 at 8%. क्या नहीं पता? Period नहीं पता इसमें. When 2100 becomes 2600 at the same time, what is the rate? इसी टाइम में ये पैसा बढ़ रहा है. मीनिंग पीरियड सेम है, तो मुझे पहले वाले में पीरियड निकालना पड़ेगा और वो दूसरे वाले में यूज करना पड़ेगा. तो आई एम गोइंग टू से पहले वाले केस में 1400 रुपया क्या बन जाता है? 1848. कितने साल में वो पता नहीं. क्या रेट पे? 8%. अब 2100 रुपया क्या बन रहा है? 2604. पीरियड पता नहीं, रेट वो भी पता नहीं, और रेट फाइंड करने बोला है. कैसे फाइंड करूं? दे आर सेइंग पीरियड जो इसमें है ना वही इसमें है, तो बेसिकली इसका पीरियड फाइंड करके इसमें यूज करो जिससे आपको रेट मिल जाए. तो लेट्स कम हियर. पहले इसका पीरियड निकालते हैं. वी विल से दैट अमाउंट इज प्रिंसिपल into 1 plus nr upon 100. Why? Everything is happening at simple interest. So I will say 1848 is equal to principal, which is 1400 into 1 plus 8n upon 100. 1400 will go to the other side and divide. 1848 divided by 1400 is 1.32 is equal to 1 plus 8n upon 100. 1 goes to the other side and subtracts. 0.32 is 8n upon 100. Cross multiply 0.32 into 100 upon 8 is n, or n is equal to 8. 4 is 32. So that is going to be 0.32 multiplied by 100 divided by 8 is 32. 4. The period is 4 years. पीरियड मिल गया. पीरियड मिल गया तो वो पीरियड यहां यूज कर लो टू फाइंड द रेट. अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 plus nr upon 100. Amount, which is 2604, is principal, which is 2100, into 1 plus 4r upon 100. 2604 divided by 2100 is 1.24 is 1 plus 4r upon 100. Take the 1 to the other side and subtract. So this will become 0.24 is 4r upon 100. Cross multiply and you will get 0.24 into 100 upon 4 is equal to r. Then what is r? 0.24 into 100 divided by 4. 6. The rate is 6%. अपनी शीट में भी था ये क्वेश्चन.
टू का कैलकुलेटर में नहीं होगा। ग्रेट, जिनको आ गया कैलकुलेटर में, फैंटास्टिक। बोलो वन इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी स्टिल नीड्स टाइम। वन इफ एनीवन स्टिल नीड्स टाइम। लवकर लिहा संस्कार। Where did you get the 4 from? Where did the divide by 4 come from? फोर कहाँ, ये और 8 है ना सेकंड वाले में। करेक्ट।
तो वहां से यू गेट द 4. अच्छा हाँ, फाइन फाइन. इफ यू गेट द आंसर दैट वे, गुड. गुड फॉर यू. Rate is always a percentage, no? Rate है, rate of interest is always a percentage measure. चलो, moving on to question number 47. The year by which a sum of rupees would be 1.21 times itself at 10% per annum compound interest is the year by which a sum of rupees would be 1.2 times itself. तो कोई पैसा रखा है आपने, what does it become? It becomes 1.21 times itself. पीरियड मांगा है, रेट दिया है. अगर रेट 10% है ना, तो इंटरेस्ट 0.1 है. तो आई विल से अमाउंट इज प्रिंसिपल into 1 plus I raised to n. Amount is 1.1 times the principal, which is principal into 1 plus 0.1 raised to n. Principal and the principal cancels. What do you get? 1.21 is equal to n. n 1.1 raised to n. Now I need to find out, is 1.21 a power of 1.1? चेक कर लो. 1.1 को अगर स्क्वायर किया तो 1.21 मिलता है. तो 1.1 का स्क्वायर is 1.1 raised to n, which means that n is equal to 2. Write that down. द ईयर बाय विच मतलब पीरियड मांगा है, बाय विच अ सम ऑफ रुपीज, एक सम है इन रुपीज, विल बिकम 1.21 टाइम्स इटसेल्फ. वो खुद के कितने टाइम्स हो जाएगा? 1.21 टाइम्स. तो 100 रुपए रखोगे तो वो 100 का 1.21 टाइम्स हो जाएगा. 200 रखोगे तो 200 का 1.21 टाइम्स हो जाएगा. तो अगर आपने पी रखा तो वो पी का 1.21 टाइम्स हो जाएगा. इन अ पीरियड दैट दे आर आस्किंग यू, क्या पीरियड में ये होगा? एट अ रेट ऑफ 10%. रेट 10% है तो क्या पीरियड में ये होगा, ऐसा पूछ रहे हैं. तो हमें प्रिंसिपल नहीं पता, बट ये पता है कि वो प्रिंसिपल 1.21 टाइम्स हो रहा है खुद में. पीरियड नहीं पता, रेट पता है. यूज द अमाउंट फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द पीरियड.
लॉग क्यों लोगे? लॉग लेके कर सकते हो, बट 1.1 स्क्वायर 11 स्क्वायर इज 121 ना, सीधा आ जाता है आंसर। जो भी पैसा रखा है आपने इज बिकमिंग 1.21 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब जो रखा था वो खुद का ही 1.21 टाइम्स हो रहा है। तो अगर पी रखा था तो वो पी के ही 1.21 टाइम्स हो रहा है। इट इज बिकमिंग 1.21 टाइम्स इटसेल्फ। जो था ओरिजिनली उसी का 1.21 टाइम्स। ओरिजिनली पी था तो पी का 1.21 टाइम्स, विच इज 1.21 पी। चलो, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन इन द एमसीक्यू सेक्शन। In the true or false section, there is no simple compound interest question. Simple compound interest questions are not put in the true or false question section. This is it. These are all the simple compound questions that have a probability of being asked. अब बिट क्वेश्चंस में तो एन्युटी नहीं है, क्योंकि जो बिट क्वेश्चन का शीट रिलीज किया उन्होंने वो लास्ट एग्जाम के पहले रिलीज किया था, विच मीन्स दैट उसमें एन्युटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे। I want to now move on to the next chapter. And the next chapter that I want to do is quadratic equations. Let's come to the basics of quadratic equations. अगर मैंने आपको एक quadratic equation दिया तो मैं आपसे क्या मांग सकता हूं? If I give you a quadratic equation which is of the type ax square plus bx plus c is equal to 0, number one, I might ask you to solve it for me. मैं ये मांग सकता हूं कि ये मुझे सॉल्व करके दे दो। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? दो मेथड। मेथड नंबर वन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दो चीजों पे पाउंड्स करोगे, एक है प्रोडक्ट और दूसरा है सम। प्रोडक्ट आता है एसी करके, सम आता है बी से। यू विल फोकस ऑन द प्रोडक्ट। तो अगर आपका प्रोडक्ट है एसी, यू विल फैक्टराइज द प्रोडक्ट टू गेट टू नंबर्स, जो मल्टीप्लाई करके एसी आता है और जो ऐड करके बी आता है। फैक्टराइज करते वक्त you will check if the product is positive or negative. अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो you will factorize and add to get the sum. अगर नेगेटिव है तो we factorize and subtract to get the sum. करेक्ट? अब ये करने के बाद वी नाउ चेक सम क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दो नंबर तो मिल गए। अगर सम पॉजिटिव है तो बोथ नंबर्स पॉजिटिव। अगर सम नेगेटिव है तो बोथ नंबर्स नेगेटिव। अगर सम पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, अगर सम नेगेटिव है तो बड़ा नंबर नेगेटिव।
ये एक ऑप्शन है टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं पसंद, अदर ऑप्शन, एंड द अदर ऑप्शन इज यूज अ फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेज दैट अगर आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो विच इज ax square plus bx plus c is equal to 0, so you can find the values of alpha and beta by using the formula minus b plus minus root of b square minus 4ac the whole divided by 2. इससे आपको कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे. So the one kind of a question is find the roots of the quadratic equation. तो बहुत rarely पूछते हैं, but this is how you do it. Put into the formula and you'll do it. The second kind of a question that is asked is मैं आपको equation दे दूंगा और मैं आपको इस quadratic equation का sum of roots which is alpha plus beta पूछूंगा which is minus b by a and मैं आपको product of roots पूछूंगा which is c by a. ये छोड़ के नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं. नेचर ऑफ द रूट्स इज डिसाइडेड बाय द डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर इन दिस फॉर्मूला और द डिस्क्रिमिनेंट, इससे आता है नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स आपको रूट्स का न्यूमेरिकल नेचर बताता है. हाउ? द डिस्क्रिमिनेंट also known as d gives us the nature of the roots. How does it give us? अगर the discriminant is पॉजिटिव तो फिर आप आगे जाके चेक करोगे कि वो सिर्फ पॉजिटिव है या पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर है या पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है. क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो रूट्स रियल है, रूट्स रैशनल है एंड रूट्स अलग अलग हैं. बट अगर पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल तो डेफिनेटली है बट इरैशनल है एंड डिस्टिंक्ट है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल है, रैशनल है बट सेम है या इक्वल है. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है तो द रूट्स आर अनरियल और इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स. This is the second kind of a question. So these are mainly the questions that can be asked. A, solve the given quadratic equation. दोनों में से एक. But मुझे पूछोगे तो 99% क्वेश्चन जो आएगा वो sum of the roots and product of the roots या nature of the roots पे ही आएगा. Very quickly write this down one at a time.
99.9% पूछोगे तो डिस्क्रिमिनेंट या सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे ही क्वेश्चन आएगा. आधे लोग बोलते हैं ऊपर का लिखना है, आधे नीचे का लिखना है. बोलो वन इन द चैट बॉक्स इफ यू आर स्टिल राइटिंग. वन इफ यू आर स्टिल राइटिंग. जल्दी. Unreal, imaginary, and complex. Unreal, imaginary, complex. Complex. चलो वन इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी स्टिल राइटिंग. इसके और नीचे. One in the chat box if anybody is still writing. Chalo then. Let's start with the old paper.
in the old paper. The first question in quadratic is question number 60. 60. If the product of the roots of the quadratic equation ax square plus 2x plus 6 is 0 is 3, the sum of the roots is what? देखो, अगर आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो ना, ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 is 0, जिसका a है, b 2 है, c 6 है. So sum of the roots alpha plus beta is minus b by a, which is minus 2 by a. और उन्होंने तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है. ठीक है, ये काम करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा आपने दिया है इज 3, बट मेरे हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय ए होता है 3. सी इज 6, ए इज ए इज 3. क्रॉस मल्टीप्लाई 6 by 3 is a is 2. अगर a आ गया तो I can substitute the a and create the equation. So मेरा equation is a के जगह पे 2x square plus 2x plus 6 is 0. आपको क्या चाहिए? The sum of the roots चाहिए. Alpha plus beta चाहिए आपको, which is minus b by a. Alpha plus beta is minus 2 by 2. Alpha plus beta is minus 1. The answer is minus. I think that is enough time. Moving on to the next. क्वेश्चन नंबर 2. तो एक ही क्वेश्चन है ओल्ड सिलेबस वाले क्वेश्चन पेपर में, ये न्यू सिलेबस वाले क्वेश्चन पेपर में. सो जस्ट वन क्वेश्चन इन द ओल्ड सिलेबस. If one root of the quadratic equation a plus 1 x square, a plus 1 x square plus 2a plus 3 x plus 3a plus 7 is equal to 0,
be the reciprocal of the other, then what is the value of a? तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है. अब एक रूट जब दूसरे का रेसिप्रोकल होता है मतलब अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल होता है. दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ सेइंग दैट अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाना चाहिए? 1. तो ए, और अब ए में कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे ए इज ए प्लस 1, बी इज 2a प्लस 3 and C is 3a plus 7. Since roots are reciprocals of each other, alpha is 1 upon beta, which implies that alpha beta is equal to 1. अगर अल्फा बीटा is equal to 1 तो product of the roots is given by C by A. तो C by A 1 है. अगर C by A 1 है तो C is equal to A है. A की वैल्यू क्या है आपके? A की वैल्यू है, C की वैल्यू is 3a plus 7. A की वैल्यू is a plus 1. Take the a there, take the 7 here. 3a minus a is 2a, is minus 6. A is equal to minus 3. A की value is minus 3. Like I said, sum of the roots and product of the roots पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे. If one root of the quadratic equation a plus 1x square, 2a plus 3x, 3a plus 7 is equal to 0 is the reciprocal of the other. एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन बीटा है. द रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. एक 2/3 है तो दूसरा 3/2 है. एक 5/7 है तो दूसरा 7/5 है. एक 1/3 है तो दूसरा 3/1 है. That is what they mean when they say that the roots are reciprocals of each other. If the roots are reciprocals of each other, multiply करने पे 1 आता है, मतलब अल्फा बीटा 1 है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1 है. और अपने हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाय. सी बाय 1 है, सी बाय 1 है तो सी एंड ए शुड बी द सेम वैल्यू. सी एंड ए शुड बी द सेम वैल्यू. मतलब 3a plus 7, which is the value of C, and a plus 1, which is the value of A, should be the same. And that is why A becomes minus 3. I hope that is clear, Kunal. A plus 1 is the value of your A. ये A अपना A है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला A, और ये A उनका A है. उनका A की वैल्यू A plus 1 है, तो ये A का A plus 1 वहां से होता है. अपने हिसाब से C से चाहिए तो कैपिटल लिख दो अगर कंफ्यूजन होने वाला है तो.
यहाँ पे कैपिटल ए लिख दो, यहाँ पे कैपिटल बी लिख दो, और यहाँ पे कैपिटल सी लिख दो। तो ये कैपिटल सी बाय कैपिटल ए, कैपिटल सी इज इक्वल टू कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए की जगह पे a+1। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट विच इज 4x² -5x -3 का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कहां से होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। तो a की वैल्यू क्या है? 4। b की वैल्यू क्या है? -5। c की वैल्यू क्या है? -3। b² - 4ac इज -5² -4 into a which is 4 into c which is -3। -5 का स्क्वायर इज 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 4s are 60 या 4 3s are 12, 12 4s are 48, that is 48 plus 12, so ये बन जाएगा 3, carry 1 7, so the answer will be 73। the value of the discriminant is 73। कुछ डिक्लेयर विक्लेयर करने नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला है। पॉजिटिव 73 ना, नेगेटिव नहीं आएगा रुपेश। पूरा फॉर्मूला तब लगाते हैं अगर उन्होंने आपसे दोनों रूट्स मांगे, इफ दे आस्क यू द टू वैल्यूज ऑफ एक्स विच इज अल्फा एंड बीटा, तो पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट पूछा है, सिर्फ b² - 4ac दोगे। चलो, आई थिंक दैट इज इनफ टाइम। दीज आर दी ओनली 2 क्वेश्चंस। तो ओल्ड सिलेबस में एक ही क्वेश्चन पूछा था, एंड न्यू सिलेबस में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ओल्ड और न्यू में इफ यू गो टू सी, ओल्ड में 2, 1, न्यू में 2। तो आप 1 या 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एंड गारंटी देता हूं आइदर सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में से ही किसी एक पे क्वेश्चन आएगा, आना है तो। हैविंग सेड दैट, लेट्स वेरी क्विकली सी के बिट क्वेश्चंस में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो टू बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर
7. What does question number 7 say? If A and B are the roots of the equation. अब A and B क्यों? क्योंकि I've said this before, alpha और beta type करने में मौत आ जाती है. And that is why they use A and B instead of alpha and beta. Because alpha and beta typing is difficult. So you might as well use A and B. If alpha and beta are the roots of the equation, कौन सी equation के roots हैं? 2x square plus 2x minus 3 is 0. Then what is the value of 2ab? अब देखो अपना ab अलग है, उनके हिसाब से ab is alpha and beta. तो वो क्या मांग रहे हैं पता है? वो 2 alpha beta मांग रहे हैं. मतलब बेसिकली दे 2 times product of the roots मांग रहे हैं. तो आपको कुछ नहीं करना है, वो उनका इंटरप्रिटेशन चेंज कर दो. आप लिख दो अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा बीटा. अंडरस्टैंड द चेंज दे हैव मेड. दे आर सेइंग दैट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हमारा अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन होता है. व्हाट डू दे वांट? दे वांट द वैल्यू ऑफ 2ab which is 2 alpha beta. So what am I going to say? I am going to say that if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then equation अगर लिख दूं 2x square plus 2x minus 3 0. अब यहां a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -3 है. आपको 2 अल्फा बीटा चाहिए. मैं पहले अल्फा बीटा दे देता हूं. Product of the roots is c by a. So product of the roots is -3 by 2. Product of the roots is -3 by 2. आपको 2 times product of the roots चाहिए. अगर दोनों बाजू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 into -3 by 2 हो जाएगा. This 2 and this 2 cancels. The answer is alpha 2 alpha beta is -3. The answer to this is -3. Correct? The answer is D, -3. Again, product of the roots, sum of the roots. उसी पे. और ये ऐसा बहुत चेंजेस करते हैं. Sometimes they also say P and Q are the roots of the quadratic equation. Not A and B, P and Q बोल देते हैं. क्योंकि again P and Q टाइपिंग के लिए easy है comparatively. That is question number 7. The next question they've asked is question number 16. What does question number 16 say? The product of the roots of the quadratic equation. बस उतना ही पूछा है. Product of the roots दे दो. Quadratic equation क्या है? Quadratic equation है 3x square minus 5x plus 2 is 0. Product of the roots. Product of the roots is a 3 है, b -5 है, c 2 है, d 1 है. 3 × 3 is 6, 6 × 2 is 12. 12 plus 2 is 16. 16 plus 2 is 24. 24 plus 2 is 26. 26 plus 2 is 28. 28 plus 2 is 32. 32 plus 2 is 36. 36 plus 2 is 48. 48 plus 2 is 52. 52 plus 2 is 54. 54 plus 2 is 56. 56 plus 2 is 57. 57 plus 2 is 58. 58 plus 2 is 59. 59 plus 2 is 60. 60 plus 2 is 120. 120 plus 2 is 240. 240 plus 2 is 400. 400 plus 2 is 600. 600 plus 2 is 800. 800 plus 2 is 900. 900 plus 2 is 1100. 1100 plus 2 is 1200. 1200 plus 2 is 1300. 1300 plus 2 is 1400. 1400 plus 2 is 1500. 1500 plus 2 is 1600. 1600 plus 2 is 1700. 1700 plus 2 is 1800. 1800 plus
product of the roots alpha beta is c by a. So product of the roots alpha beta is 2 by 3. So the answer is C, 2 by 3. That is question number 16. Moving on to question number 34. The sum of the roots of the quadratic equation. Quadratic equation क्या है? X square minus 3x is equal to 0. तो if you notice, A 1 है क्योंकि x square का कोएफिशिएंट A होता है. B minus 3 है क्यों? क्योंकि x का कोएफिशिएंट B होता है. What about C? C है ही नहीं. C 0 है. There is no constant. कोई बात नहीं. आपको sum of the roots पूछा है. Sum of the roots alpha plus beta is given by minus of b by a. The sum of the roots is given by minus of minus 3 by 1. Sum of the roots is 3. Chalo, I hope that is enough time. Question number 42. What does question number 42 say? For a quadratic equation, x square minus 2x plus 1 is 0, the product of the roots is. और quadratic equation है x square minus 2x plus 1 is 0. A 1 है, B minus 2 है, C 1 है. The product of the roots is C by A. The product of the roots is 1 by 1. The product of the roots is 1. So the answer is B1.
Question number 42, everyone. That was the last question in quadratic in MCQs. We now move into quadratic in true or false. The roots of the quadratic equation 2x square minus 12x plus 18 is 0 are not equal. They are saying roots equal नहीं है. अब roots equal है, ये कैसे check होता है? Let's go back. In your b square minus 4ac equal है अगर discriminant 0 है तो. ये काम करते हैं, चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या है. अगर 0 है तो इक्वल है, 0 नहीं है तो इक्वल नहीं है. देन वी विल टेल देम आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर minus 12x plus 18 is 0. A here is 2, B here is minus 12, C here is 18. The value of the discriminant, which is b square minus 4ac, is minus 12 square minus 4 into a, which is 2, into c, which is 18. 12 square is 144 minus 4 into 2 into 18, which is 144. 0 आता है, तो I will say since b square minus 4ac is 0, the roots are equal. इक्वल हैं. वो क्या बोल रहे हैं? इक्वल नहीं है. फॉल्स है, बिकॉज दे आर इक्वल. अगेन स्टेटमेंट पढ़ो ठीक से. दे आर सेइंग दैट द रूट्स आर नॉट इक्वल. पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तो बोलता है रूट्स इक्वल हैं. अगर रूट्स इक्वल हैं तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स. उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उन्होंने बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल नहीं है. अब रूट्स इक्वल है या नहीं ये कौन बताता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू. कैसे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो रूट्स इक्वल हैं. तो हम एक काम करते हैं, ये स्टेटमेंट रहने दो, मैं इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करता हूं. कर लिया. क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया. बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया तो उसका कंक्लूजन क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आने का कंक्लूजन ये है कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं. आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो दैट दे आर नॉट इक्वल. आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है ना. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर आर इक्वल बोल देते ना तो आंसर ट्रू आता. यू आर सेइंग इट्स नॉट इक्वल, तो आंसर फॉल्स है.
Moving on to the next. Question number 11. The sum of the roots of the quadratic equation x square minus x plus 1 is 0 is 1. Sum of the roots, a here is 1, b here is minus 1, c here is 1. Sum of the roots, alpha plus beta, is minus of b by alpha plus beta is minus of 1 by minus 1, which is 1. Is it true? Yes. The sum of the roots of the quadratic equation is 1. The answer is true. Coming to question number 29. One root of the quadratic equation 3x square plus 10x plus 30 is a reciprocal of the other. They are asking true है या false है. तो अब ये प्रूव करने के दो तरीके हैं. मेथड नंबर 1, फाइंड कर लो दोनों रूट्स और देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स आते हैं क्या. अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स आएंगे तो एक 2 आएगा तो दूसरा 1/2, एक 5 तो दूसरा 1/5, एक लेट्स से 7/3 आएगा तो दूसरा 3/7 आएगा. दैट इज व्हाट दे मीन बाय वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. बट यही प्रूव करने का एक दूसरा तरीका है. दूसरा तरीका इज दे आर आस्किंग यू एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या. अगर है तो अल्फा 1/बीटा है, एंड अगर अल्फा 1/बीटा है तो अल्फा बीटा 1 है. और इन अदर वर्ड्स अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1 देन द रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. चेक कर लेते हैं. ए 3 है, बी 10 है, सी 3 है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 3/3. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1. अगर अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई करके 1 आता है, दो नंबर मल्टीप्लाई करके 1 तभी आता है अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. सो दैट इंप्लाइज दैट अल्फा इज 1/बीटा, which implies that the roots are reciprocals of each other, which means the answer to this is true. It's a true statement.
That was question number 29. One last question in quadratic, again on sum of the roots and product of the roots itself. Question number 35. What does question number 35 say? Question number 35 says that the sum of the roots of the quadratic equation 3x square plus 2x minus 5 is 0 is minus 2 by 3. मैं निकाल लेता हूं सम ऑफ द रूट्स, फिर चेक करते हैं ट्रू है या फॉल्स है. ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू minus 5 है. Sum of the roots alpha plus beta is minus b by a, which is minus 2 by 3. Is that what they're saying? Yes. And the answer is true. Such a statement. एग्जाम के क्वेश्चंस डिस्कस किए ना मैंने, उसमें भी देखा ना सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे ही क्वेश्चंस आए ना. तो ये मास्टर कर लो, इसी के आसपास कुछ होगा. चलो, I think that is enough time. That was the last question in quadratic. एक चैप्टर बचता है, which is sets, छोटा सा फटाक से करने वाला हूँ. 20 minutes है. There is a good chance that we might finish the basics and we also might be able to do a few questions. So आ जाओ to the next chapter, that is set theory. टाइम स्पीड डिस्टेंस पे ना एक ही क्वेश्चन होगा जो शीट में होगा, एंड ये बिल्कुल नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बिट क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं होगा. तो आई एम प्लानिंग टू क्रिएट मोर क्वेश्चंस, तो मैं कल लेता हूं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं. चलो, कमिंग टू सेट थ्योरी. अरे हाँ कुणाल, मैंने क्या बोला, मैं सब चैप्टर लूंगा बोला ना मैंने एक बार. तो आज का दिन है नहीं ना, मैंने 3 बार बोला कि मैं 3 दिन हूं, 7, 8 और 9 सब मैथ्स लूंगा, सब स्टैट्स लूंगा, एवरीथिंग. चलो, सेट थियरी वी आर गोइंग टू डू द बेसिक्स. जो इंपॉर्टेंट है वो सेट थियरी में, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ है तो एडिशन थ्योरम. एडिशन थ्योरम चूरन की तरह चाट लो, क्योंकि क्वेश्चन एडिशन थ्योरम पे ही आएगा. So the first thing that you need to know is addition theorem, which is number of units in A union B.
is the number in A plus the number in B minus the number in A intersection B. अब इसे क्या क्या बुलाते हैं? A union, वो बाद में लिख लेता हूं, चलो. A, apart from this, you need to know De Morgan's law. De Morgan's law is number in A dash union B dash is the number in A intersection B, the whole dash. The number in A dash intersection B dash is the number in A union B, the whole dash. Apart from this, complement. The number of elements in A complement is the number in the universe minus the number in A. Apart from this, subtraction. The number in A minus B, which is also read as the number in A and not B, is nothing else but whatever is there in A minus whatever is there in A intersection B. अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. अब इसमें नोटिफिकेशंस क्या क्या है, जैसे कि ए यूनियन बी को क्या क्या बुलाते हैं? ए यूनियन बी इज कॉल्ड ए यूनियन बी, इट्स कॉल्ड ए और बी, इट्स कॉल्ड ए प्लस बी, इट्स कॉल्ड आइदर ए or B. It is called A or B or both. It is also called at least one of the two. सब का मतलब वही है, A union B. A intersection B को A and B बुलाते हैं, मतलब ए एंड बी दोनों में. नेक्स्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नॉट ए एंड नॉट बी, नाइदर ए नॉर बी. हाँ करेक्ट. तो क्या प्रॉब्लम है? ए एंड बी तो बोथ होता है ना. पूरा स्टेटमेंट लिखो तो मुझे समझो पूछने की कोशिश कर रहे हो. नॉट ए एंड नॉट बी, नाइदर ए नॉर बी, एंड द लास्ट वन इज, मैं भूल गया, नन ऑफ द टू. द टू. तो आपने यूनियन में बी क्यों लिखा? अरे क्योंकि यूनियन में क्या क्या आता है? यूनियन में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए में है, जो बी में है, और दोनों में होगे तो यूनियन में नहीं लिखोगे. अगर कोई एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है तो दोनों यूनियन में लिखोगे या नहीं लिखोगे? अरे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो. तो दोनों में रहेगा तो ए नॉट बी रहेगा ना. दोनों में रहेगा तो ए नॉट बी कैसे हुआ? दोनों में रहेगा तो ए एंड बी होगा ना. ए में भी है, बी में भी है. जब आप यूनियन लेते हो तो आप ए के एलिमेंट लेते हो, बी के एलिमेंट लेते हो, और दोनों में कॉमन है वो भी लेते हो. तो ए भी होगा, बी भी होगा, और दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी होंगे. हाँ व्यवसाय. ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को हम नॉट ए बुलाते हैं. करेक्ट. अब ये छोड़ के क्या बचा? ए माइनस बी. ए माइनस बी, ए एंड नॉट बी, ए बट नॉट बी. A minus B also written as A and not B. So this is A and not B. This is A
but not B, also read as only A. Correct? A minus B. और क्या बचा? I think इसमें दिस इज प्रीटी मच इट. ए एंड बी में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेंगे ना. हाँ, ए एंड बी में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स. और क्या बचा? आई थिंक दिस प्रीटी मच कवर्स मोस्ट ऑफ इट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इफ आई से इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो if A and B are mutually exclusive, तो A intersection B is a null set. या it is an empty set. ये छोड़ के if A and B are, ये रहने दो, probability में लिखिए. Done. Null set है. तो the number of elements in A intersection B is 0. Number of subsets of a set with n elements. अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 raised to n. 2 raised to n सबसेट्स बना सकते हो. आई थिंक दिस प्रीटी मच कवर्स क्वाइट अ बिट ऑफ इट. तो वन, अरे वो प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो आप. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 1 माइनस ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करती हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इज द यूनिवर्स माइनस ए. आप प्रोबेबिलिटी मिक्स कर रहे हो उसमें. चलो फटाफट लिखना चालू कर दो. ये पहले लिख लो, फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला ऊपर ले लेता हूं मैं. पहले ये लिख लो.
हो गया है लिख के? स्क्रॉल करूं ऊपर? इसी को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, कलर चेंज करेंगे।